स्केड्यूल में देखते हैं कि किस किस टीम के लिए मौका होगा नवीन, जल्दी से उसे रीड आउट करेंगे और बेहद जल्दी उन क्षण पर पहुंचेंगे जहां पर हम सभी आज के मुकाबलों की बात करने वाले हैं। तो पहला बड़ा मुकाबला नवीन आपके समक्ष जल्दी ही नजर आएगा। Yeah, very much. Just a few minutes from interesting. Then the Chola Veerans will take on the Humpy Heroes, and there they will be really tested once again. The defense of the Humpy Heroes, where the Chola Veerans will be coming into this match after a loss yesterday. Yeah. So they will really want to win today's game. जी आज का मुकाबला जीतना चाहेंगी यहाँ पर। सबसे पहले आइए नवीन, अगर आपने बात छेड़ ही दी है मैच नंबर 105 की तो उसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से माचिस को जलाने के लिए सिर्फ वहां पर एक चिंगारी बहुत होता है, तो ये चिंगारी आज हम्पी हीरोज में आपको नजर आ सकता है, क्योंकि हम्पी हीरोज अभी तक इस चैलेंजर राउंड में कोई भी मुकाबला जीता नहीं है। चोला वीरंस भी 3 में से 2 मुकाबले हारा है, यानी कि वो भी नहीं जाएगा कि 5वें छठे पायदान पर समाप्त करे। तो चोला वीरंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट विन होगी, हम्पी हीरोज के लिए भी इंपॉर्टेंट विन होगी, और अब तक तीनों बार जब ये टीम भिड़ी है ना नवीन, तो तीनों बार हम्पी हीरोज जीता है। Yeah, that is one aspect that they can really keep into the confidence of themselves. But I don't see that same Humpy Heroes now, Harshit. The problem is, as I said yesterday, Gagan Gowda is only active or very efficient in the 27 minutes. Not even the 30th minute, I'll say that. Within 30 minutes, he should be contributing much. The other 10 minutes, the other 6 players should contribute to the Humpy Heroes, where we are still not finding that 10 minutes contribution from others. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप पूरे 40 मिनट्स गेम में रहना चाहते हैं, और कबड्डी में तो हम जानते हैं ना कि एक एक मिनट कितना बड़ा दर्जा तय कर जाता है। चाहे वो दुर्गेश कुमार के हमने 2 ही रेड्स में ऑल आउट कर देना हो विपक्षियों को, या फिर गगन गौड़ा बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में कैसे खेल इधर से उधर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है नवीन आपने, और किसी एक खिलाड़ी पर अगर अतिरिक्त दारोमदार होता है तो टीम वो थोड़ा पिछड़ती है। जैसे डिफेंस में कल पूरा दारोमदार विनीत पे नजर आया, उन्होंने 7 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए नवीन, बट बहुत अच्छे खेले और पिछले 2-3 मैच उनके बहुत अच्छे गए हैं। Yeah, for the Chola Veerans, yes, it's really important that Vineet Munichami today will be in the same form against Gagan Glorious Gowda. So that will be really nice. 7 tackle points. Yeah, watch out, Gagan Gowda. Yesterday you had Vishwanath Vijay Kumar, who was very strong in all those back holds. And today, if you really are geared up for Vineet, I'm sure you would have seen Vineet, what Vineet did. Because what happens is Vineet is very strong in those ankle holds. So that's what we saw in his 7 points. So yeah, interesting contest against Gagan today. जी हाँ, बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट वहां पर होने वाला है, और इस विनीत को मुनी चामी कहते हैं वैसे, और मैं कहना चाहूंगा चाम कर रहे हैं अभी तक के मुकाबलों में, और आशा यही करेंगे कि आज भी अगर अगेंस्ट ग्लोरियस परफॉर्मर के विरुद्ध अगर चाम करते हैं तो उस चाम का मजा ही कुछ और होगा। बट फिर से नवीन, आज भी दारोमदार कहीं ना कहीं हम्पी हीरोज का गगन गौड़ा पर होगा। मधुका वीरप्पा, तेजा नायक को और थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। Yeah, and also I will want to have Murugan in his top form. If you really speak about the law of averages, yesterday he did not perform well, and coming in from that right cover to dash against Gagan Gowda, where Gagan does not utilize the lobby very well. And only thing, Harshit, Gautam should just slow the dash. I mean, he's very quick, and Gagan just pushes him off. And that turning of the pages happens in 2 hands. If Gautam can slow his dash, time his dash very correctly, will be a nice tackle against Gagan Gowda. बट आज इस टीम के लिए कोई मुश्किलात नहीं खड़ी होगी, यही हम आशा करेंगे। हम्पी हीरोज भी अच्छा करे, यही उनके लिए विशेष है। बट नवीन, एक और बड़ा मुकाबला आएगा जहां पर मैच नंबर 105। Today it is going to be a tough fight for sure for the Periyar Panthers, and Palani Tuskers, they are peaking at the right time, Harshit. And see, they have 2 strong left corners now. They have Vishwanath Vijay Kumar, and they have Tamilarasan. So you do not comes in whenever is needed. Ayanathan Ranganathan comes in. Yeah. And so they have 2 set defenders for 1 position. So that is going to be a tough fight for already a defense-heavy Periyar Panthers. The reason I'm saying that is Periyar Panthers Raiders to be watch out for. They'll have to really look at that aspect. जी हाँ, बहुत जरूरी होगा कि किस प्रकार से रोहित यादव आज रेड लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा विश्वनाथ की तरफ गए तो बैकहोल्ड बहुत अच्छी तरह से करते हुए नजर आएंगे। बट क्योंकि अभी हम पेरियार पैंथर्स की रेडर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पलनी की रेडर्स की बात करें नवीन, तो वहां पर जयसूर्य नागराजन, राम कुमार, स्टुअर्ट सिंह, जेट पशुपति जरूर थोड़ा सा इंजरी से यहाँ पर व्यतीत हो रहे हैं। जेट पशुपति वो भी बड़ी जल्दी शुरुआती साथ में आएंगे, यही कहना है उनके कोच का। बट राम कुमार नवीन, पिछले 2 मैचेस से उनके जो सुपर 10 नजर आए हैं, वो सच में एफर्टलेस उन्होंने प्रदर्शन दिखलाया है। And what he does very nicely is, Arshit, he goes for all the touch points.
he is not a bonus seeker. So he does not go for the bonus points. And also, yes, Nakul Saini, if you look at him, he is another kind of a raider where he goes for the bonus points more. He goes for that touch points more for the Periyar Panthers. So there is two different raiders. See, that was a problem yesterday for the Humpy Heroes, where Gagan was going for more bonus points. And when you go for bonus points, the only thing is you will be pushing your do or die raid away. That's all. That's the only advantage. And of course, you'll be just getting 1 point. But the players will not be reduced on the mat. You cannot push the all out onto the opposition. But Jayasuriya Nagarajan and Ramkumar go for touch points. When they go in for touch points and the players are reduced, it's a big challenge today for Lokesh Gosalia and Anuj Saini. Both of them. Because Jayasuriya will be going against Anuj Saini and Ramkumar will be going against Lokesh Gosalia. बहुत टफ कॉन्टेस्ट होने वाला आज लोकेश गोसलिया के विरुद्ध बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रदर्शन कर दिखलाया 4 टैकल पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए पेरियार पैंथर्स के और पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर वहां पर आए थे पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए जरूर इंजरी उनकी पूरी तरह से रेक्टिफाई कर चुके हैं ये संकेत बहुत अच्छे हैं नवीन बट आइए सीधा मैच नंबर 103 की तरफ अगर हम प्रस्थान करें तो वो मैच नीलगिरी नाइट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और अरावली एरोज क्या सच में बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रही है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है That's a good question. Sach mein bahut achhi form. Yeah, see, I really want them to perform well. See, Sahil Bhangra is good. If he can actually replicate his performance that he put out yesterday of that Super 10, I think he got more than 15-16 straight points. So if he can actually replicate this against Velavan Muruganandan and of course against the right cover Manigandan Nesamani because he's the right raider there, Sahil Bhangra. And don't forget, Santosh Srinivasan will come and attack you. He is not a good right corner defender against left raiders, but he's a very, very good right corner against right raiders because Santosh Srinivasan goes for those frontal block, frontal double thigh holds. So watch out, Sahil Bhangra. And also Brijpal Singh. Brijpal Singh should, again, see, he should stop running the length and breadth of the court. I know he just runs around from left to right, right to left. There is no proper movement in his footwork. I think that is very natural from him. But Nilgiri Knights' defense, I'm sure they will not be disturbed too much with Brijpal's confusing footwork. जी हाँ बिल्कुल अनसेटल करने की कोशिश जरूर होती है ब्रजपाल की बार आज चाहेंगे अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटीज के साथ कुछ अच्छी जंप्स के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स वहां पर निकालें बट कहीं ना कहीं नवीन जब हम बात कर रहे थे रिबल की तो निश्चित तौर पर वैसा ही कल प्रदर्शन राजेंद्र बाकर ने अपने टैकल्स के साथ दिखाया 7 टैकल पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए और दर्शाया कि किस कैलिबर के वो खिलाड़ी है और कैसे कैप्टिवेट कर वो अपनी टीम के लिए एक पाइवोटल रोल निभा सकते हैं आइए नवीन जल्दी से चलते हैं राजेंद्र बाकर के पैकेज की तरफ Yeah, yesterday Rajendra Bakar was in his true colors. Yes, the pocket dynamite actually was very good. He went out against Nakul Saini more often as a right raider was coming towards him. So yes, and I'll tell you what, Nilgiri Knights have more right raiders. If you speak about Marimuthu Selvam and you speak about, of course, Vasant Murugan also is a right raider. And unfortunately, this is not a good news. I think where Surya Selvam is injured, I think he's twisted his knee and he is not featuring in the 11 as well. So missing out Surya Selvam is a big blow for the Nilgiri Knights. But K. Harish as a left raider and as a captain, he's out of form. No match practice, Harshit. And today against Anuj Saini, if he can probably go out there and get some points, that'll be nice. But today, you know what? I think I'm watching the correct. I'm watching the Aravali Arrows' lineup. He did well, Harish, against Periyar Panthers. But for the Aravali Arrows, Ankit Jat today has to really perform on that right corner because Ankit Jat today, if he is also out of form, like K. Harish, that will be a big problem for the Aravali Arrows. जी हाँ वो एक थोड़ा सा सिली एरर से अगर अंकित जॉट आज बचेंगे तो कहीं ना कहीं के हरीश को वहां पर आप रोक सकते हैं और के हरीश और एस मरीमुथु सेल्वम आज नीलगिरी नाइट्स को अगर जीतना है तो इन दोनों रेडर्स को बहुत अच्छा कार्य करना बेहद जरूरी होगा नवीन क्योंकि पिछले कई मुकाबलों से हमने देखा है एस मरीमुथु सेल्वम और साथ ही साथ के हरीश रेड पर जा रहे हैं बट थोड़ी सी कम रेड्स लगा रहे हैं तो आज चाहेंगे वसंत मुर्गन के साथ साथ बहुत अच्छा कार्य करें बट वसंत ने बहुत अच्छा कार्य किया अभी तक 7 रेड पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम के लिए प्राप्त किए Very much. And I really don't want to lose out on Kesavan Raja because for me, I know Harish is your captain. I know he is your senior player, whatever. But Vasant Murugan is just come in. He's settled down in the raiding department very nicely. But Kesavan Raja, Harshit, if you remember, when Harish was not there, Surya Selvam, Kesavan Raja, Marimuthu Selvam. This was the raiding trio. And if you don't make the Raiders play, they will lose momentum.
It does not happen with the defenders, but Raiders want to keep on playing. If you really remember Pratik Dakardaya, even though with all that injury, he wanted to play. Ashish Narwal, I think he had got the most number of bandages on his head. Yeah, every bandage he was there, hands, legs, head, everywhere. But still he wanted to play. So Raiders want to keep on playing to have that momentum going. But I'm really wondering if Kesavan Raja, if he has lost momentum, that will be a bad news for Nilgiri Knights because he's still been considered only in the substitution. या बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत सारे रेडर्स है ना नवीन कभी कभार वो बहुत ज्यादा रेडर्स एक सुंदर विश्व कन्नन वहां पर वापस आ चुके हैं सूर्या सेल्वम जरूर इंजर्ड है क्या सब्स्टिट्यूट्स में वो नजर आएंगे एस मरिमुथु सेल्वम आपको विघ्नेश नजर आते हैं वसंत नजर आते हैं क्षमा कीजिएगा तो बहुत सारे रेडर्स में कैसे यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी कर सकते हैं या फिर कौन वहां से एक बार फिर से टॉप 3 रेडर्स होंगे ये देखना बेहद जरूरी होगा कोच के लिए Yeah, totally. But for me, Arshit, even before we close out this pre-show and go into that match very soon, see, for me, I always see Rohit Beniwal is good. Nothing against Rohit Beniwal, but Navpreet Singh is a better raider. When you compare Navpreet Singh to Rohit Beniwal, for me, Navpreet Singh is experienced. He's a left raider. He can get you points. He will make sure that the defense is a little confusing here and there. And he's also good in assisting the defense. So I really don't understand why Navpreet Singh is always on the substitution lines. I think, see, that coach needs to put in more confidence, put in more trust on the players like Navpreet Singh to push him there and start him in the starting 7. जी हाँ ये भी एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई नवीन की किस प्रकार से डिफेंस में भी अपना कार्य कर सकते हैं नवप्रीत और कैसे उनकी हाई फ्लायर्स काम आ सकती है टीम के लिए और जरूर कोच चाहेंगे कि जो भी प्लेयर्स को खिलाएं लगातार उन्हें कॉन्फिडेंस वहां पर बिल्डअप करने दें बट नवीन अभी हम समय हो चुका है कि इस मैच को और बिल्डअप करते हैं और सीधा ले चलते हैं इस बड़े मुकाबले की तरफ जहां पर नीलगिरी नाइट्स अपनी पहली जीत ढूंढ रही है और अरावली एरोज चाहेगा कि अपनी जीत की स्ट्रीक पर उसे आगे की तरफ ले जा पाए और टॉप 4 में अपनी जगह को और पक्की कर पाए बचाइए उस प्लेज वीडियो की तरफ चलते हैं और उस प्लेज वीडियो के पश्चात सीधा करते हैं इस मुकाबले की शुरुआत नवीन हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. Much needed another feather in that crown where the Yuva Kabaddi series has introduced this sort of a methodology to go out there and take a pledge from everybody. Not just the players, the officials, the people connected with the Yuva Kabaddi series backstage. Everybody has taken this pledge. Right, let's go ahead with 103 as Aravali Arrows will be facing the biggest threat of the night, I should say, from Nilgiri Knights. Harshit, can we have both the teams on the mat, please? Challenger round, day number 4, match number 103. Important battle out for both the teams. नीलगिरी नाइट्स को चाहिए इस चैलेंजर राउंड में पहली जीत और चाहिए अरावली एरोज को लगातार जीत सीधा चलना चाहेंगे दोनों ही टीमों को यहां मैट पर बुलाने की तरफ तो क्या आज फिर से वो चट्टान भरा प्रदर्शन आपको टीम में नजर आ पाएगा क्या वो सशक्तिकरण क्या वो दृढ़ता के कॉम्बिनेशन के साथ एरोज सीधा नीलगिरी को ढेर कर पाएगा आ रहे हैं राजेंद्र भाकर के साथ अरावली एरोज Yeah, they really need to get that confidence in every department, raiding and defense both. Can they do that? Aravali Arrows is a big question against the Nilgiri Knights today. और क्या नीलगिरी नाइट्स के लिए ये हार एक तूफान से पहले सन्नाटे की तरह है क्या अब जीत का तूफान और जीत का साइक्लोन ला पाएगी ये बवंडर से परिपूर्ण टीम आ रहे हैं नीलगिरी नाइट्स Still searching for that first ever victory in the challenger round. The Nilgiri Knights
Not a very nice place to be because they were unbeaten in the booster round and a few changes in the team. They'll really need to get that coordination very right. But very well coordinated officials as Kajal leads the lineup ahead behind Sagar Panchal, Akshay Desai, and everybody else follows suit here in the Yuva Kabaddi series is Chamundi Vihar Indoor Stadium at Mysore. Right, Aravali Arrows in front of us. Yesterday was a nice little walk around in the park for them, but today it's going to be a road that is filled with a little bit of thorns and stones. They'll have to get their A game up there. Rajendra Bakar and Ankit Jat on the corners. Brijpal Singh, Rohit Beniwal and Sahil Bangra will be in the raiding unit. Prem Badu and Chetan Chaudhary in the covers as well, as Hariom Chaudhary will be coming in when needed as for the raider. Pradeep Singh, Rohit Pancholi, Dev Gurjar will be a good defender, and my biggest asset probably in the raiding department for Aravali Arrows will be Navpreet Singh. He will come in when it's needed. But right now, next to me is Navneet. Good evening, Navneet. शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए नीलगिरी नाइट्स की टीम है और मिडिल में है मरी मुत्तू। राइट कवर और लेफ्ट कवर की बात करें तो मणिकंदन, और लेफ्ट कवर पर भी रहेंगे एस मणिकंदन। राइट इन और लेफ्ट इन की बात करें वसंत मुर्गन और के हरीश। राइट कॉर्नर पर रहेंगे संतोष श्रीनिवासन और लेफ्ट कॉर्नर पर रहेंगे वेलवन। इसके अलावा एरुमलाई और First man to do that in the summer edition of the 2023 Gagan Glorious Gora, and closely followed by the Chambal Challengers is two main weapons as Sanskar Mishra and Durgesh Kumar on the top three raiders list. राजेंद्र भाकर 21 में से 55 पॉइंट, तो ये है टॉप 3 डिफेंडर्स। And today the top two defenders are there for the Aravali Arrows in both the corners. Can the right raiders of the Nilgiri Knights get some points against them is a big question. Ankit Jat on that right corner and Rajendra Bhakkar with that left corner, and to yesterday coming in with a big high five of 7 points. Actually, let's see what happened. Mohan Gowda, the referee, he flips the coin. Chetan Chaudhary says, I have won the toss and let me take the coin and we will take the court, as the first trade will happen from the Nilgiri Knights. But for the Aravali Arrows, the defense will be really guarded well, and it will be once again Prem Badu who will be making sure all the association of the defense will be good. But importantly, Ankit Jat should make sure that he does not commit errors. 58 tackle points, top second defender of this Yuva Kabaddi Series summer edition. But he's got a very good left corner as well. But recently in the couple of matches, he's not been in good form here. So that should not be a problem today for Aravali Arrows is what they will think. जी हाँ, अंकित जाट में तरकश की तीर थे और वहीं के हरीश यहाँ पर नीलगिरी नाइट्स के 15 मैच 58 पॉइंट और रेट स्ट्राइक रेट 51.78। तो नीलगिरी नाइट्स के ये नाइट क्या करते हैं आज देखना है। Yeah, the Aravali Arrows much needed victory yesterday in the challenger round. Of course, their friends along with the Periyar Panthers took it a little light onto themselves, but today everything is going to be heavy, and it will be made sure the heavyweights will be going against all the Aravali Arrows whatever they have done. So until now they have had that 36% victory, but I'm waiting for that question to come in where all our experts will be asked for the question. Yeah, there you go. Right, do you think Navpreet Singh from Aravali Arrows looks like Jasprit Bumrah? Madhav Sharma, good question. More than Jasprit Bumrah, I'll tell you what. He is Navpreet Singh, and I want him to raid more. He might resemble him in one angle. Nice shot being taken there by Deva to cut the question out and put it out on Navpreet Singh. But he on one profile looks like it, but I want him to raid more, Navneet, than the looks of Bumrah. I really believe in his raiding skills. जी हाँ, और बात करें यंग डेज की बुमराह की तो निश्चित रूप से थोड़ा सा चेहरा उनसे मिलता है। नीलगिरी नाइट्स 22 मैच 16 जीत 4 हार 2 टाइज, और वो देखिए प्रतिशत कई टॉपर वालों की है 72.73। Yeah, right. And what will be the question here for the Nilgiri Knights is really important. Right, what is it? It is, should Nilgiri give more raiding chances to Velavan, Shreya Dahiya?
No, I will not probably agree with that because it is just if you really want to talk about this, it is a fortnight's moon. That's what it's been for Velavan. It is not very advisable because when Velavan goes in for the do or die raid, there are two things that is happening. Because one, yeah, if he gets the point, it is good. But if he does not get a point, the left corner is left hanging, and there is nobody in that left the do or die raid. Let's get to the countdown and get this match started. As the toss was won by the Aravliaros, the first raid might happen from K. Harish or Marimuthu Selvam. We'll see who's that. No, Vasant comes in as Amar Varma gave the go-ahead for the first raid. Nilgiri Knights, they're coming in with a break day, Amit, and I think that will be working well in their favor. जी हाँ, बिल्कुल वसंत मुरुगन 10 नंबर के खिलाड़ी और वसंत यहाँ पर खाली हाथ गए हैं। दूसरी तरफ ब्रजपाल और यहाँ पूरे 7 डिफेंडर्स हैं नवीन। और देखिए कैसे कॉर्नर्स में डिफेंडर एकदम बैठ जाते हैं और ये भी एक टेक्निक का पार्ट है कि आप अपने बॉडी वेट को लो रखते हैं ताकि वो एंकल होल्ड करने को मिले। लेकिन यहाँ पर देखिए कवर के खिलाड़ी को गिरा दिया है वहां पर। Again, left cover does not go back in time. Manikandan Sudamani, and he was standing in the chain with K. Harish. Now that was again a problem with all these Dravidian teams. I wonder what is going wrong with them. With the covers, they are not standing with the defender. And look at this, wonderful work. Now that is the best cover defense position. Prem Badu and Chetan Chaudhary. He went back in time. And then look at the trap that was being set. Wonderful double ankle hold. As the Aravliaros now are playing it like a champions. Wait. Yeah, Rajendra Bakar was waiting for K. Harish to come to him. First point for the Pakur Dynamo. बीच यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए अरावली एरोज से। नीलगिरी नाइट्स अभी भी 0। और अगर ये नामकरण की बात पर जाए तो ये जो दोनों नाम रखा गया है ये दोनों पहाड़ों के नाम है, एक राजस्थान में और नीलगिरी नाइट्स तो नीलगिरी की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, जो कि बहुत ही डाइवर्स यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ये पूरे अगर दुनिया की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट डेंस डाइवर्स चीज़ मिलती है। और जब भी आप यहाँ पर मरीमुथु को 1 पॉइंट मिलेगा, जब भी आप देखते हैं 1 पॉइंट कि कुछ नई स्पीसीज मिली है। अक्सर मैंने देखा है न्यूज़पेपर में कुछ मेढक मिलते हैं, तो नए नए मेढक अक्सर आविष्कार होते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। Right. That is very good info there, Navneet. Yeah, different species of frogs. Well said, but that was a different kind of raiding from Marimuthu Selvam to get that first point. And I was wondering what was the right cover doing on that occasion. Chetan Chaudhary, the captain, he just came in without a plan, and he just gave away an easy point as Sahil Bangra once again gone in and stolen a bonus point. Now Vasant Murugan. And Rajendra Bakar comes around in a flash. That pocket dynamite today has blasted at the right time. 1 point. Wow. What a strong back hold on Vasant. He did not expect that at all. Right. And now the coach is giving him some confidence. That is very, very good. Yeah, we were seeing Rajendra Bakar turning rebel against his coach. But the moment he's been achieving something, that is going well for the Aravliaros on that left corner. यार डिफेंस का वक्त आया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिफेंस हो रहा है। सारे खिलाड़ी पीछे चले गए हैं और रोहित को बोल रहे हैं कि रोहित आपको अगर पॉइंट चाहिए तो अंदर तक आइए, वरना मैं आपको एडवांस टैकल से तो पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ। Very much.
And now it is on the shoulders of the Raiders to get some points. Marimuthu Selvam, before yesterday, he had a bad match the day before. And I hope yesterday's rest would have actually given him time to think around his actions. He will not probably go towards Rajendra Baka, but right cover comes across this time. Chetan Chowdhury says, Red around. I am the 1 captain, point. I'll go for that Arabia single Rose. tie hold. This defense today is peaking 21. on the Nilgiri Knights, Navneet. जी हमारी मुत्तू को वहां पे कोई चांस नहीं मिला. Jersey number 21, green card, foul play, no foul play. Right, that's one green card for the Aravali Arrows. And next time if Chetan Chowdhury is being found guilty or Sahil Bhangra has been found guilty, it has to be an yellow card. Right, let's have a note on that as well as Sahil Bhangra. Now, will be attaining it against just 4 defenders. And what a lovely kick! Santosh Srinivasan on that right corner should have come in and saved that left corner. Manikandan Nesamani 1 was point. standing Arabia alone. Rose. This is onslaught, Navneet, by the Raiders and defenders, both of Aravali Arrows. जी हाँ बिल्कुल जिस तरीके का किक लगाया है यहाँ पर ये कबड्डी का खेल कम और मुझे टाइक्वांडो की याद आ गई. Yeah, Kabaddi is a mix of everything. Chess, of course, wrestling, taekwondo, and whatever you want to say. Even archery sometimes with those toe touches. As this lad has come in, wanted to do what? Probably he thinks that he's got a bonus point. And Yeah, Kesavan Kamal ka Raja. khel. Come on! Come on! Yeah! Now Red go out. out on the 1 bench. point. Arabia And Rose. think what did you do wrong? You have reduced the defender Pallavan, and Raja Ram wants a bonuses review. He is animated. The bonus also was not given, and look at Rajendra Baka, frontal block and tie hold. Ah, Navneet, that was the question. That was a question from our fan who actually asked the expert question. Do you want to send Velavan Muruganandan in the raids? He actually specifically asked do or die raids. Even in a normal raid, he could not get a Let us point. say 1 And point. he's Arabia reduced Rose. a defender. Number 88 And now out. Santosh Srinivasan reduces a defender. There has to be a substitute now. Substitution. Nilgiri Knights, please come. 18 in, 66 out. Red. और Red. ये जो स्कोर लाइन है 1 और 8 ऐसी स्टार्ट की उम्मीद नीलगिरी नाइट्स तो नहीं कर रही थी. यहाँ पर सुंदर आए हैं. 13 मिनट 8 सेकंड का खेल शेष. और यहाँ पर देखिए डिफेंस जो है हाई लाइन आ गया है और उन्हें बोनस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोनस का न्योता दिया था. हाथों को एक्सटेंड किया, वक्त गुजर रहा है, प्रेशर होगा सुंदर पर और सुंदर Oh my यहाँ God. पर सुंदरता के साथ मध्य रेखा को क्रॉस Bonus कर plus गए. 1 point. Nilgiri Knights. Number 2 Oh. out. Until then, Rajendra Bhakkar was very, very good. The artillery man, Substitution, Sundara Nilgiri Vishwakarman, Knights, first please gets come. the bonus. The bonus was 66 given away in, 4 easily. out. And Rajendra Bhakkar wanted Red. to attempt that frontal double thigh hold. Was not been there. Right, as there is one defender and there is also Sundara Vishwakarman who's come in. Sahil Bhangra will go towards the raider. Sundara Vishwakarman actually is showing some skills of the ankle hold, but he says no hand touch. 10 seconds, 9 seconds. Sahil Bhangra, don't get very, very greedy. You will have to go back or else you'll give 2 points away. 4 seconds. Yeah, that's it. Very good work from Sundara Vishwakarman and Manikandan Nesamani. और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जैसे पिछले बार वहाँ पर 2 पॉइंट ले आए, उससे थोड़ा सा गेम यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है नीलगिरी नाइट्स के लिए. अगर ऑल आउट हो जाती तो उन्हें 2 पॉइंट देना पड़ता. और यहाँ पर फ्रंट ब्लॉक आया है, मिस्टेक हुआ है प्रेम के द्वारा और सुंदर Nilgiri को Knights. Jersey और number 2 पॉइंट 77 मिलेगा. and 81 out. Beautiful, beautifully turned the pages around on Prem Bhadu. The left cover was in the left corner. It is tough, Red. Prem. I know you're a cover defender, Red, but a Aravali. block dash from the corner is very, very tough. It is a tough skill to execute. And even with Prem Bhadu's mistake, out goes Chetan Chowdhury. The captain wanted to support his partner, but not being there. But Sundara Vishwakarman, wow, what a super substitute that he works
or rather he is there selected as the artillery man in the Indian Army. But this is Rohit Ganiwal getting the 1 point. very Arabia Rose. swift toe Number touch 66 out. on Manigantan Nesamani. But Sundar Vishwakannan, Navneet, came out there, saved the Nilgiri Knights from the all-out. And here Nesamani was not ready. He was not in a bending, attacking position for the toe touch. And now what all Vasant should do is try and play on the do-or-die raid. The defense of the Aravali arrows are being very good today. And that's what I was mentioning. No, Rajendra Bakar. Let us say Come on. 1 He point. bangs the Nilgiri mat Knights. hard. Number 2 out. That's the second time he's committed an error. जी हाँ, Red. And the escape route, the reason why, Vasant was escaping is because he was keeping his knees away from that double thigh hold that Rajendra Bakar has, Navneet. जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या रोहित, नहीं, रोहित को कोई मौका नहीं मिलेगा। Red and out. 1 point. Yeah, Nilgiri Knights. surprise, ankle hold, and the coach is not happy. As Navpreet Singh comes in. Substitution. We have seen that Arabia Rose. Please animated coach, the more he gets 18, animated, the 6 players out. underperform. Red. Surprise ankle hold. That is coming in from Marimuthu Selvam from the left in position. That's their first tackle point. Unbelievable here for the Nilgiri Knights, where they have got the tackle point after 10 minutes. But what a turnaround, what a comeback. Very well came across and has saved the Nilgiri Knights. And see now, Navneet, it's a super tackle situation for the Aravali Arrows. ये बिल्कुल सुपर टैकल सिचुएशन। और यहाँ वसंत चले गए हैं क्योंकि 1 और 8 का स्कोर था, यहाँ पर 7 और 9 हो गया है। तो कबड्डी का खेल कभी भी पल में शोला, पल में शबनम कितने रंग बदलती है, वो वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साहिल बगारा कमाल के खिलाड़ी। Yeah, Kabaddi is mixed with a lot of highs and lows. Yeah, that is why we are all such crazy fans of this game. The only thing is constant in this game is unexpectedness. You will be not expecting something. That is what is constant in this game. As in life, change is constant in Kabaddi. Unexpectedness is constant. Marimuthu Selvam, has he got his hands on Navpreet Singh? No. Should have gone for it. Should have really gone for Navpreet on the hand touch. But does not get it. Can the Nilgiri Knights stay quiet in this defense? As Sahil Bagada wants to also take time. He is just killing clock. I think he's seeing every defender eye to eye and asking, did you guys have lunch? Was the food okay today in the hotel? That's what is running in his mind, and he will go back. He will go back empty-handed. Yeah. Time out. Arabia Rose. Right. ले लिया मैंने। अब मेरी बात सुन ले अंकित, इनको तोड़ेगा, टूटना मत जब तक ये नहीं मारे। तेरे में आए इतनी सटीक मारनी है, कच्ची नहीं मारनी 1% भी। हाँ, वो लंबा आएगा ना काले लेफ्ट बॉल, वो क्रॉस पार करके तेरे पे भाज्य को सीधो, समझ गए? तेरे अटैक लगते बर्जी में पीछे रहूंगा मैं। परफेक्ट, ऐसे नहीं, ये आड़ू की जैसे नहीं, परफेक्ट घुसना है अंकित। Right. Defense has been asked to keep it tight. Right. Do or die raid. Interesting as Vasant goes in for a super tackle situation. And that is why the timeout was taken. I will want Vasant to go towards Navpreet Singh. That is what Ankit Jad has said. Ankit Jad said, if he comes to attack on you, I will come around for the dash. Can he fake against Navneet? No! I wanted him to go towards Navneet there, Navneet. Super tackle. And 2 points. that was a wrong Arabia move Rose. from Vasant. He went towards a stronger defender, Ankit Jat. जी हाँ, क्या कमाल से वहां पर पटकनी दी है अंकित जाट ने। Please come. 6 in, 8 out. Red. A nice double thigh hold. Very wrong for that move. Do or die raid. And have they been ready for this? No. Rich passing. 2 points. 2 points. Number 9 and 18. You want review? Relax. You want review? There are hundreds of thousands of eyes, rather lakhs of eyes seeing you. And there are many cameras who are covering all your actions on the kabaddi mat. Review. Defender. Respect the kabaddi mat. Let's see what just happened.
वो defenders. Yeah, he was going in to confuse the defenders. And of course, there was Sundara Vishwakannan who attempted Let's see 3 first. points. Okay, please go back. TV umpire, Aravali Arrows challenge is 3 points. Addition 2 points. Please review. And I did not see 3 points there. अरावली आरो शायद यहाँ ओवरली एम्बिशियस हो गई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है 2 पॉइंट है, पर देखेंगे। कभी कभी खिलाड़ी वो देख पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक रह पाते हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से यहाँ पर मणिकंदन आए हैं और जो मरिमुत्तु काफी दूर है वहाँ पर। Yeah. So it is Sundara Vishwakannan. Review unsuccessful. And Let us save 2 points. Aravali Arrows. Unsuccessful Aravali review. Arrows. Aravali Arrows No more lose their review. No more reviews. 9-8. No more arguments on the kabaddi mat. Right. This is nice. First half, review lost because of Brijpal Singh's over-aggression. Aggression is good. Over-aggression is really bad. Right. The bonus was given away to Marty Muthuselvam Yanami. मरिमुत्तु, और वहाँ पर बैलेंस बिगड़ा था, लेकिन बैलेंस को संभाल लिया। Yeah. And also Amar Bonus Verma point, said, Nilgiri Knights. relax guys, I am seeing what is happening. And that was nice. That's a good sign from Amar Verma. He asked Prem Badu and team to be quiet. किस तरीके से वहाँ पर भी बैलेंस बना करके रखा है, और साहिल बगारा यहाँ पर फंस जाएंगे। मछली फंस गई है, बहुत ही प्रयास कर रही है और मिडिल लाइन को टच कर दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, 4 point. और Aravali यहाँ ऑल Arrows. आउट हो गई है नीलगिरी Nilgiri नाइट्स। Knights all out. Again, the problem is Velavan Muruganandan. He should All in. forget about trading. He should All in. really forget about Nilgiri that. all in. They have inflicted the all-out, and the coach himself can't believe that the all-out has been inflicted. There, देखिए यहाँ the पर double ankle hold was not strong enough from Velavan. He That's number released 2. the grips. Green card. What is he trying to Give do? it the red, calling. He released the grips. No calling. Oh. Then it became very easy for बिल्कुल Sahil और Bagara. विश्वसनीय। और मुझे ऐसा लगा नवीन, जैसे कि जब आप मछली पकड़ते हैं, मछली आपके जाल में फंस जाती है और आप सेलिब्रेट भी करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज शाम में आपको मछली खाने को मिलेगा, लेकिन आपके जाल से बिल्कुल जब रात होने वाली होती है और उस समय मछली निकल जाती है और आपके हाथ में खाली प्लेट रह जाता है, कुछ वैसा ही सीन मुझे वहां पर लगा। Yeah, very much. But can the Nilgiri Knights now stop being the fish that has been caught in the net? Once they avoided the all-out, second time they could not. Brijpal Singh is claiming, no Brijpal, you don't have a review. No, if you are claiming, go back. Stop swearing on the mat. No point given. You keep swearing on the mat and then you come back and say you're getting injured on the mat. It's because you guys are swearing very falsely on the mat. The mat is God for kabaddi lovers. Right? Stop swearing unnecessarily, Brijpal. Can we go back to that replay? Can we please go back to that replay and see what was Brijpal actually claiming? Did he get the toe touch? The whole world watches. Oh my God! That is from Rajasthan to Gujarat, Brijpal Singh. You are in Rajasthan. The right-hand defender is standing in Gujarat. Oh my God! Yeah, the whole world is watching you, my friend. Bonus plus 1 point. Aravali Arrows. थोड़ा सा वहाँ Number 12 बेटर out. एग्जाम्पल हो जाता कि राजस्थान और महाराष्ट्र, क्योंकि बीच में गुजरात आता है। Yeah, agreed. Completely agreed. And Navneet, you remember that question still? Right. People asking Velavan should go to raid or no. First, let him be a good defender in that left corner. He's given away a lot of points today, and Nilgiri Knights are struggling because of that. मरिमुत्तु यहाँ पर आए हैं डू और डाई रेस के लिए। 2 मिनट 41 सेकंड का खेल बचा है और Arrows save. 1 मरिमुत्तु को point. मिला एक Nilgiri पॉइंट। Knights. Number 3 out. क्या झटके से वो वापस जाते हैं और अंकित जाट के पास वहां पर कोई समय नहीं रहता है। देखिए फ्रंट ब्लॉक आया था और मरिमुत्तु अपना जो बॉडी वेट है वो पीछे डालते हैं और अंकित के लिए बहुत ही वेट ज्यादा हो जाता है वहां पर। Correct. And he also used that anti-blocking skill and the turn towards the lobby.
We always say, isn't it? Right Raiders, turn towards the lobby, turn right, and have the anti-blocking skills going. That's what Ankit Jat was really shocked of doing. Now, number 6, Richpal does not fake claim anything. He will go back. इसी वक्त 1 मिनट, थोड़ी देर में 1 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा और यहाँ पकड़े गए हैं मरीमुथु को एक और पॉइंट मिलेगा। 100 सेकंड से कम का खेल रहेगा। 10 और 19 का ये स्कोर और अरावली एरोज इस हाफ में काफी अच्छा खेली है। Yeah, I think coaching from the bench also deserves a green card. I think Rajesh, the coach of Aravali Arrows, knows that rule. You can't oppose that rule. You can't coach from the bench too much. Yeah, the tackle came out from outside the box line there, Navneet. That was a problem for Chetan Chaudhary. Marimuthu is very, very good. He's got the momentum in his favor. Now Rohit Beniwal tries that toe touch. He's not got anything. And Santosh Srinivasan has been kept busy. And that left cover goes back in time. Nothing for the Raiders. The next raid for the Aravali Arrows will be a do-or-die raid. Can Vasant go back quickly? Yeah, intelligent work. He goes back quickly, inflicts the do-or-die raid. Raid within 5 seconds. साहिल बगारा आए हैं डू और डाई रेड में और 40 सेकंड का खेल बचा है इस हाफ में और देखना है क्या साहिल बगारा यहाँ पर कुछ पॉइंट लेकर के आ पाते हैं। बोनस शायद ले लिया है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। Yeah, even I feel it. Even I feel the bonus is given away by Vela 1, but that's okay. He did not give out another extra point going for the ankle Bonus hold. point, Aravali Arrows. Yeah, bonus point given. Can we see that replay? It's a do-or-die raid. Bonus point looked convincing. Can we check that on? Yeah, brilliant. Good work from Sahil Bagara. And good work from our EVS operator Ram today. He is totally awake today, Navneet. I love that presence of mind. Whoa, what is he doing? Marimuthu Selvam. 1 point, Aravali Arrows. He was running on the wrong direction. Half time, change the court. And look at that. जी वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा। राजेंद्र भाकर से जा करके वो टकरा गए और खुद ही गिर गए थे। Yeah, I think Navneet, he was not ready or he did not expect Rajendra Bakar to be on the right corner. That is an intelligent move from the pocket dynamite. He's got it good. And the Aravali Arrows are leading this by a massive margin. In the second half, if the Aravali Arrows do not win from here on in, but I don't know from where will they win. This is the Aravali Arrows' match, is what I feel, unless and until they commit to some silly errors in the second half. Let's see what happens as we take a short little break and come back soon. Welcome back, everybody, as this match of the 103rd match of the Yuva Kabaddi Series' summer edition has completely gone to the defenders of Aravali Arrows. Yes, they started off the proceedings very, very nicely, and then the Raiders also joined hands, apart from Brijpal Singh losing a review for a bonus that was not there, apart from also fake claiming one touch point. But apart from all that, Sahil Bagara has been very, very impressive. He's gone in there, number 21. He's got all the points. He's been an impressive raider for me. And Rajendra Bakar on that left corner. He's already got 4 tackle points. And that is very nice. Where the Raiders of the Nilgiri Knights actually tried to bring the match back, especially Sundara Vishwakarnan. The all-out was saved because of Sundara Vishwakannan's timely inclusion as a substitute. The first all-out was saved, but not the second time. So yeah, one all-out inflicted. And this is where they lost the review. Fake claiming 3 points, and that is where they lost the review. And this was the all-out again. Sahil Bagara, wow, what a struggle that was, and all problems there for the left corner Velavan Muruganandan. He is
been everywhere. He's thinking of raiding. He's not doing his primary job as a defender, and he's not even got any raid marks today. As I'm Navin Chori, alongside with me is Navneet. The toss was won by the Arab Arrows, so they will get the chance to raid first here, Navneet. जी हाँ, और टॉस जीतने से सिर्फ रेड वाली बात नहीं है, इसका भी कि जब And just keep that preserved in your drawing board. That's good. जी हाँ, और नवीन एक बात बताइएगा, जब आप बचपन में खेलते थे कोई भी गेम हो, फुटबॉल का, कबड्डी का, क्रिकेट का, तो जब टॉस होता था तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि बच्चों के पास पैसा भी नहीं रहता था, तो किस तरीके से टॉस होता था पहले? Oh, that's very, very interesting. Very interesting. As Ankit Bonus Jat plus 1 point. does an uninterested Knights, job. number 3 out. He wants to go for the ankle hold after the bonus is attempted. And Sundar Vishwakannan gets bonus plus 1. Beautiful work. Right. I'll tell you what. I've been, playing until 2019 as well. 2019, 20 around. So yeah, playing around in higher standards was nice. This was a high standard dash. Brilliant work from Manikandan combination. Manikandan, Sudaramani going across for the dash from that left cover. Yeah, Sahil Bagara now feels the pinch of that left cover defender. See, we used to we used to have a stone, like if you're really talking about tennis ball cricket. And the decision has come, Amar Verma. Now, if you change something, even people are watching you as well. The decision has already come. You have given Raider out because of some coach trying to influence your decision. Don't do this. It stays the same. Thank you, Amar Verma. You have my respect. You have my utmost respect. Brilliant work. Right. So when there were no coins, Navneet, we used to have a stone where one side used to be plain, one side used to be a little bumpier, and then we used to flip it over and say plain or bumpy. We used to call like that. That was also a remembrance. Yeah, when I'm saying before I started playing leather ball or stitch ball cricket, during those times. But after I started playing, professional cricket, the only point is it becomes the umpire's responsibility. So we are not bothered. Whatever the umpire gets, it becomes the umpire's responsibility to get the toss. जी हाँ, और मुझे याद है स्टोन वाली चीजें हम भी करते थे, प्लेन या रफ साइड होता था, और कभी कभी रफ साइड को हम लोग हिंदी में खरखर भी बोलते थे, प्लेन या खरखर। और इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो कभी कभी कुछ होती थी ब्रांडिंग, अगर आपको याद होगा कि आप प्लास्टिक के रैपर में कुछ चीजें बिकती हैं, और एक तरफ हिंदी में रहता था, एक तरफ अंग्रेजी में रहता था, और उसको हवा में उड़ा करके हम लोग बोलते थे कि हिंदी वाली साइड गिरेगी या अंग्रेजी वाली साइड। तो एक तरीके से वहां पर भी टॉस होता था, और एक टॉस का तरीका होता था, हम लोग छोटा सा एक पत्थर अपने हाथों में फंसा लेते थे और जोर से हाथ को घुमाते थे, और थोड़ी देर बाद जब स्टॉप करते थे तो बोलते थे कि हाथ में पत्थर है या नहीं है। Correct. Especially between thumb and the index finger. That place where we have the thumb and the index finger, where we used to hide the small, tiny coin, tiny stone. Oh, that's a very good 1 point. running kick on Chetan Chaudhary. Number 81 out. He did not go back in time. Brilliant work from Marimuthu Selvam. Yeah, being casual on the kabaddi mat, you become that casualty. Red. Now Preet Singh was really unhappy with that. Now do or die raid, and Navneet, with our discussion, you know what? One thing is Rajaram done very strongly. He's taken off Velavan Muruganandan from that left corner. He's put in Yelumalai Murthy. He says enough is enough. Velavan, you want to keep on raiding? Raid from the bench, not on the kabaddi mat. That's what he's told. So do or die raid. 8 seconds, 7 seconds, no review, and dashed out. Brilliant Bonus work. point. Arablia Rose. Better out. 1 point. Nilgiri Knights. Bonus point. But he should be warming the bench for a while now. जी अब बचपाल वहां पर बोनस तो ले आए थे बेहद खूबसूरती के साथ, लेकिन देखिए वहां पर उनकी रास्ते में मुलाकात हो गई डिफेंडर से, और कोई चांस नहीं था उनके पास
मध्य रेखा को क्रॉस करने से लॉबी के थ्रू उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। I don't understand something. Akshay Desai and all others, Mohan Gowda, everybody, when Amar Verma is given the decision, what is the point of having that conversation? It depends on Amar Verma whether to have the conference or no. Bonus plus 1 point. Aravali Arrows. One defender out. Red out. 1 point. Nilgiri Knights. Great. Great. This is like happening n number of times. Before you decide, before the decision comes in, decide for it. Yeah. Great. It was Sundar Vishwakannan. His contact from the lobby was lifted off on the bounce. Why not have that conversation first and then decide? And nevertheless, Marimuthu Selvam comes in. But yeah, the trader who's got out in that super tackle. Wow, wow! This is 1 point. Marimuthu's Nilgiri Knights. pressure Number 2 out. on Rajendra Bakar. जी हाँ, राजेंद्र भाकर वहां पर एकदम ऐसा लगा कि उड़ से गए, क्योंकि ग्रिप तो सही बैठाया था पर वो जो फोर्स वहां पर था उसको संभाल नहीं पाए। I remembered surfboarding. You know, when we were there in, of course, Deva was not there, our PCR director. Apart from Deva, everybody of us were there. That was very nice. Where we were there in Bangkok and Pattaya. Deva, we missed you there. You know what all you missed. I came back and told a lot of stories. But yeah, in Pattaya we were also surfboarding for a little. Rajendra Bakar looked like as if he was surfboarding on Marimuthu Selvam. Substitution. Aravali Arrows. Please Yeah, come. in that meantime. Oh my God! 8 out. Navpreet Singh wanted to go in and raid, and Rohit Beniwal has been asked to come in by the coach. रोहित बेनीवाल यहाँ पर आए हैं। एक ही पॉइंट मिला है आज रेड का उन्हें। अरावली 25, नीलगिरी 16। और देखिए पूरी जो डिफेंस है बहुत ही आगे तक है और जवाब में एक एम्प्टी रेड और मिला है, यानी कि डू और डाई रेड पर खेलना चाहती है। Correct. And Rohit tried the bonus the previous time but did not get it. This is the second do or die in continuous contention for the Aravali Arrows. They are missing out on that initial part of the lead big time. The defense has settled down when Yelumalai Murthy has come in. Strong ankle hold from Santosh Srinivasan. 1 Brilliant point. work. Nilgiri Knights. And no Raiders left for the Aravali Arrows. Please come. Strong ankle hold and also that support, Navneet, was brilliant. Now, I think Nilgiri Knights will be going in for a super tackle situation. Wait. No review Wait, for stand the here. Aravali Arrows. I think there are a few cards in Amar Verma's hand. Please. Which card is going to come out? Yellow card! 21. Sahil Bangra 2 minutes. Please. disturbing the game 2 minutes and he's been sent out. And No technical this point. No, is no, going but to be a only surrender raid. suspension. Sahil Bangra is being given the green yellow card. So there is just one man now standing. Am I right with this? No. How could this be possible? Right, do or die raid. Marimuthu What I Selvam said. also gets it, and One now point. it becomes Nilgiri Knights. Number as 3 out. and almost a surrender raid. Ankit Jat goes off. So when Sahil Bangra is sent out, no, I don't understand this. Navneet, we'll have to see when Rohit Beniwal went into raid. Were there 3 defenders or 4 defenders on the mat? So because you will be giving a yellow card only for a defender who is already on the mat. It's no point giving a yellow card for a defender or for a player who's been tackled out and sitting on the bench. That does not mean anything. Prem Badu now last man standing. 7 seconds, 8 seconds. I think they will accept that all out. 1 plus 2, 3 point. Yeah. Nilgiri Knights. Aravali Arrows. All out. जी हाँ, यहाँ पर नीलगिरी नाइट्स ने थोड़ा सा कमबैक किया है और वहां पर अरावली एरोज के स्कोर की थोड़ा सा Substitution. क्लोजली गए हैं। बस 4 Nilgiri Knights. Please come.
पॉइंट्स का डिफरेंस रहा। और 1 in, एक चीज 10 नवीन, out. अगर हम ध्यान देंगे तो मैच के शुरुआती दौर में 8 और 1 से लीड बना ली थी अरावली एरोज ने। उसके बाद नीलगिरी Yeah. नाइट्स ने कमबैक किया। उसके बाद फिर अरावली एरोज ने वो डिफरेंस बना लिया 10 पॉइंट का, और नीलगिरी नाइट्स फिर से एक बार वापसी की है। तो देखना है ये But जो I'll tell 11 you- मिनट का खेल शेष है। जी हाँ, No, go on, Navneet, go on. जी हाँ, और देखना है कि क्या ये 11 मिनट में फिर से अरावली एरोज वो लंबी सी गैप बना लेती है, या लगातार हमें 11 मिनट का रोमांच देखने को मिलेगा। Oh, hang on. It was looking like a pursuit, but Rohit Beniwal. But if Kesavan Raja could have stood 1 second more, I know. It was 10, 9, 8. That was a countdown that was going in, and Rohit Bonus Beniwal point, ran Aravali in. Arrows. Bonus point. Let's go back to that pursuit very soon. We will come back to that comeback story. Navneet, you were discussing about nice things. No, not this. The pursuit. All right. Not a save. 1 point. Once again, Nilgiri Pradesh Knights. Prakandit Number gets 77 his out. hand touch on the covers. The problem with Aravali Arrows is, Navneet, everybody is a captain there, and everybody is a coach. Red. See, Prem Badu again does not go back in time, and when Rohit Beniwal is trying to go raid, everybody wants to give his suggestions to him. Too many cooks spoiling the entire dish. And the reason I say that is because first half, Aravali Arrows were 21 and Nilgiri Knights were just 10. And now see what the difference is. From 10, if Nilgiri Knights have come back from that position, 12 points already. 12 points. And how much the Nilgiri Knights have got? Aravali Arrows have got only 5. Only 5. Rajendra Baka, high five again with the pocket dynamite. Bonus point. Yesterday, 7 Nilgiri points. Knights. And today, a high five. Another bonus being stolen away. जी हाँ, साहिल बगारा आए हैं यहाँ। 26 और 23 का ये स्कोर है, और साहिल Bonus plus बगारा 1 point. Aravali Arrows. Number 2 out. 2 पॉइंट वहां पर लेकर के गए हैं अपनी टीम के लिए। 28 और 23 का स्कोर। एरुमलाई Yelumalai Murthy shouldn't have gone for the ankle hold when the bonus is attempted. Sahil Bagara gets a super 10. Right. Brilliant work. He's been one bright spot in the Aravali Arrows. He's always been good. He's also been playing in the highest spirit of Kabaddi also. Yeah. एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, और मैं आपसे सवाल करूंगा। यहाँ पर देखिए Not a सुंदर save. विश्व को 1 point. Nilgiri Knights. Number एक पॉइंट 77 मिलेगा। out. तो चर्चा का ये Yeah, विषय the है dash कि from एलू Prem मलाई Badu की was आप not बात right. कर रहे थे, Yeah. और वो जो स्पेलिंग होता है ZH लिखा रहता है, और ZH जो होता है वो केरल में भी लिखा रहता है। तो मुझे लगता है कि केरल वाला जो ZH है उसमें थोड़ा र का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा है और तमिल में ल का है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जैसे No. कोरिकोट। No. I'll tell you how it Right is. out. As Sahil Bagara 1 point. has been Nilgiri backheld Knights. by Yelumalai Murthy. Now see Yelumalai. Elu. It is Wait, even in Malayalam and in Tamil it's the same thing. He was blinded completely. And see, it is actually in Tamil and Malayalam both. See, even when we really pronounce Tamil, it is Tamil. That sound is only in Tamil. And it is the language that has been told Not a as save. Tamil. 1 point. Running and Nilgiri catch Knights. Number 2 on out. Rajendra Baka. Brilliant work. We will go back to the pronunciation once again. Go back. Pocket Dynamo. Guys, relax. Nilgiri Knights, stop swearing on the mat. It does not mean, lovely. Big hand touch. When the referee has given the decision, don't bother. What are you asking for? What is this lad want? Why is he saying hi to all the defenders? You want to make yourself look funny, you will be looking funny, bro. Right. We will go back to that pronunciation, as Aravali Arrows have no review. Let's keep reminding everybody about that. So, in Tamil, when you say Tamil, because you cannot write that Strategic in timeout. English, that's why the Z comes in, the Z comes in. Can we listen to Raja Ram, please? We have not heard Raja Ram at all.
சொல்லுப்பா அவன் பக்கம் வச்சுக்க போறேன் நீங்க ஒரு தேரையில அடிச்சு விட்டீங்கன்னா அடுத்த 3 பேர் அவன் அடிக்கிறான் அப்படியே அடுத்த 2 பேர் நம்ம அடிச்சு நீ ஆடு உன்னால முடியும் நீ ஆடு உனக்கு கிடைச்சிட்டு நீ பாரு கான்ஃபிடென்ட் ஆடு சரியா தம்பி வேலைவா சரி வேலை வேணும் பேசவா இதான் சூப்பர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடாத ஆனா வச்ச கான்ஃபிடென்ட் வச்சு கவர்ட்டு சொல்லிடு நீ ஏன்னா நீ அவன் பாயிண்ட்டுக்கு ஆடத்து பார்ப்பான் ஏன்னா லிஸ்ட் பிளேயர் ஆயிட்டான் அவன் ரஷ் பண்ணுவான் போனஸ் போட்டான்னா இவனை சொல்லிடு விடாதடா ஏய் மணி मनी we go back to bonus discussion. Yeah. झूठा बोनस मार बोनस के यहाँ पे अटैक लात उठा दे झूठा बोनस मार बार बार झूठी अटेम्प्ट ले समझा As always, no coordination. Right, Ankit Jat has been warned by Mohan Gowda. That is good. I will want the referees to stop the verbal warnings and flash out all the cards what they have in their pockets to keep up the kabaddi spirit. But yeah, what did Rajaram say is very clear. He said, for Mari Muthuselvam, he is given a free hand. He says, go out there, you're getting points, you do whatever you feel like is right on the raiding front. And for the defense, he's asked Elumalai Murthy to indicate the covers if they are going for the back holds and if he is going for the tackle. That is what has been told. And for Rohit Beniwal, nice running hand touch. Brilliant. And I love Elumalai Murthy. The moment the hand touch was there, he accepted it. That is good, Navneet. So yeah, just go back to that question that you asked. And even in Malayalam, we have a lot of pronunciation. It is not Kozhikode as people try to read that. It's Kozhikode. It's Kori. That you cannot write in English. That's why we write Z. We've had names. 2 points. 2 points. Nilgiri Knights. Number 77 and 3 out. Ankle hold right. And Sundara Vishwakannan gets 2. Great. जी हाँ और वही Yeah, we have names called वही जो Pugal. छोटी Pugal means appreciation. Pugal means something you achieved in life. Everybody is talking about you. That is called Pugal. So that's why even in Pugal we have Z. Yes, Navneet. Go over your question. जी हाँ और वही मैं मलयालम में देखता हूँ कि जैसे कोड़िकोड भरतपुरा तो वो वाला जो आप एलपुरा तो आप वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा आर की तरह होता है और जैसे तमिल में जो होता है वो एल की तरह होता है तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट No, both are old. Both are old. See, when you say Alapura, Santosh Srinivasan, relax until the decision comes in. Relax. Oh, Brijpal, go back. You be quiet. Finger on your lips. Finger on your lips. Okay, fine. What is happening? Substitution. What is happening? Oh, once again, Rajasthan 13, to Maharashtra. 13, the entire world is watching the number 6. Please come. Yeah, I think he'll be warned. Jersey number 6. Green card. Argument. Green card. No argument. Can we have a technical point? No green card, no technical point. Number 6, the whole world is watching. Again, faith claiming. Do or die raid. Now can we ask you to really touch a defender and get a point? Yeah, slip. Slip on the kabaddi mat. Try your way out. Have you got the bonus? You don't have a review. Go for it. Please play kabaddi in his highest spirit. He's been tackled out. He will stand up and complain of a trouser pull and a jersey pull now. As a raider is being tackled. He is complaining for a jersey and a trouser pull as expected. Jersey number 60. Green card. Jersey number 66. Jersey only. No jersey only. बिल्कुल वहां पर नजदीक पहुंच गए थे और मध्य रेखा को छू नहीं पाए वहां ब्रजपाल। यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी रह गए। डू और डाई रेड 29 जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो देखने को मिल गया है। नंबर 30 आउट और नीलगिरी नाइट्स 30, अरावली एरोस 29। Yeah, and number 30 out. What a lovely.
Substitution. He's Aravlia been Rose, please come. amazing. 10 in, 30 81 for out. the Nilgiri Knights. Red. And he's got the 30 Red. number out. That is nice. Hariom Chaudhary had come in. Last man standing. Rohit Beniwal. Can this be a second all out for the Aravlia Rose? And Navneet, what did I say? In the end of the first half, what did I say? If Nilgiri Knights have to win this, they will want to make a big comeback. And if Aravlia Rose lose it, it will be with their silly errors and silly mistakes. This is what has happened. 21 were the Aravlia Rose. And now Rohit is running out of time. 2-1. Time out. All out. Red out. Second on. Bonus point. On the Aravlia Aravlia Rose. Rose. 1 plus 2, 3 point. Nilgiri Knights. Aravlia Rose. All out. All in. So yeah, we have time for the all-in. Yeah. So Alapula, Kozhikode, okay, and there are few ill pronunciations. Time out. Malayalam Nilgiri is Knights. kind of similar to Tamil. Is kind of similar to Telugu. That is the beauty சார் of the Dravidian டைம் language. பார்த்துட்டீங்களா ஒன்லி 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு 1 நிமிஷம் 56 செகண்ட் தான் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் 4 ரைட் தான் சரியா நீ ஆடினாலும் சரி கான்ஃபிடன்ட் அவன் டேய் தம்பி இங்க வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணிதே ஆகணும் ஒரு டிஃபென்ஸ் ஏன்னா அவன் கான்ஃபிடன்ட் உள்ள அவனுக்கு ஸ்கோர் Okay, தேவை so he wants the defenders to get points. लिए What is जाना है happening here? वहाँ। ठीक है ना, मरना नहीं है, पॉइंट लाना है, दिमाग से। टाइम कम है तुम्हारे पास, जिसमें से 2 रेड तो उनकी है। चलो बेटे, और रोक के कैच मारनी भी है। Good points from Rajesh, the coach. He's asked the defense to also have a tackle point, and he's asked the Raiders to also get a bonus point. सुंदर विश्वकर्णन, यहाँ पर 33 और 30 का स्कोर। नीलगिरी नाइट्स बस पिछले 1 मिनट से इस मैच में लीड पर आ गई है, और वो जो नीलगिरी तार जो उनका सिंबल है वो बहुत ही फक्र से आसमान की तरफ ऊपर देख रहा है। And remember, Sundara Vishwakannan, he came from the bench, Navneet, to save the Nilgiri Knights from the all-out. And Bonus this point. is once Aravlia again Rose. Red a out. fabulous 1 point. tackle. Nilgiri Knights. Yeah, he's got the bonus nevertheless. Sahil Bagara, he was asked by the coach to take the bonus. He did that job, but he did not escape because there the bonus attempt was good. The strong block from Manikandan came across Nesamani from that right cover. Yeah, so super substitute coming in from the bench, Navneet. Just unbelievable way to make this comeback work for them. And look at this, Aravlia Rose with their unnecessary aggression on the kabaddi match have lost a lot of momentum. They have not played kabaddi, they have just went ahead and fake claimed everything, and that is not 1 right. point. Really not Aravlia right for the Rose. Aravlia Number Rose. 88 Especially out. that jersey number 6. Whoever that raider is, he needs to just calm down. Time out. Nilgiri Knights. Now, can we listen to ஆமா ஏன்னா ஃபுல் டைம் ஆட்டம் பாத்துக்க அதுக்கு முன்னாடி அது பாஸ் ஆடி இருக்க இப்போ நீ டைம் எடுத்துக்க Director Deva to request? ध्यान रखना, टाइम खराब नहीं होना चाहिए भाई। ये कैच मार दो, पॉइंट उधर से ले आएगा। See, didn't I say everybody is a captain, everybody is a coach in this team? जी हाँ, और आप जैसे कह रहे थे, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, और देखना है आखिरी 30 सेकंड में पता चलेगा कि फूड किसका स्पॉइल हुआ है। 1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा अरावली आरोस को। Red out. 1 point. Aravlia Rose. 1 point. Sundar Vishwakarnan should have at least gone for the bonus point. No, he was stepping on the bonus line. Nice ankle hold by Ankit Jat on that right corner. And after that, they will have everything against the Raiders. Right, now, Red. last raid. Okay, lad. I mean, he just needs to really calm down. Right, Sahil Bagara, last raid for the Aravlia Rose. Can they get 1 point? Yes, they can. You first. Oh my God! Oh my God! Santosh Srinivasan also Red has out. 2 points. gone out Aravlia of the, Rose. gone outside Please, the lobby. So 2 points. Please. Stand. Aravlia Rose Redder. are leading this.
Oh my God! Yeah, one defender going into the lobby, and one defender hand touched by Sahil Bagada. Brilliant work, Elumalai Murthy and Manikandan. TV Empire, Nilgiri Knights challenges only 1 point. Addition 2 points. Please review. No, Navneet. I think they will lose their review in the last seconds. जी हाँ, बस now बात ऐसा see है here. कि 10 सेकंड बचा है. Don't you think he's gone into the lobby? Absolutely. Yeah. Fatal error from Manikandan Nesamani. Unbelievable error. And now, Elumalai Murthy has also given away a point. Yeah, Raja Ram just can't believe what happened. That's a big comeback by Nilgiri Knights. Review unsuccessful. Let us save 2 points. Yes, Aravali arrows. given away 2 more Knights, points. We lost you, no more review. Right, just 1 point now. Still they are fighting. Still that team is still fighting the Aravali Arrows. Of something, I don't understand what. Yeah, Sahil Bagada has been good. This is an unnecessary point. Right, last raid of the match. Can he get a bonus point? Can he tie a game? Oh, it's a tie! 1 point. Nilgiri Knights. Oh my God, Number it's 2 a out. tie as of now. It is not a bonus point. Rajendra Bhakar goes for the ankle hold. And it is 35 all. Wait. Should have waited more. Sahil doesn't touch him. 35 all. Last raid. What a match on our hands. He has to go in deep. Either you win, either you lose. No, that's a fabulous tackle. And Aravali Arrows have won this match. Can you believe this? It's the last raid which had decided the match. out. Whoa, 1 my point. God, Aravali Nilgiri Arrows Knights. take a bow. Brother. And this is player the inside. goodness of playing Kabaddi at the highest spirit. Aravali Arrows have lost this. Nilgiri Knights have Match played over. Kabaddi to the highest spirit, and Kabaddi has respected them back, Navneet. What a match! एब्सोल्युटली. और यहाँ पर जिस तरीके का मैच हमें देखने को मिला, एकदम स्पीचलेस. और आखिरी 30 सेकंड में 3 से 4 रेड हो गया और मैच नीलगिरी नाइट्स के करवट बैठा है. और जिस स्पिरिट के साथ नीलगिरी नाइट्स ने आज खेला है, मानना पड़ेगा कोई चांस नहीं दे रहा था उन्हें. और यहाँ पर बहस जारी है. Yeah, the game number 96, where the Humpy Heroes and the Palani Tuskers, I think they had set a benchmark, but this match has broken all the benchmarks. Mark this game out. 103rd match, and this is a classic example of how a Kabaddi match has to be played, has to be respected, has to be made a comeback on. And yeah, my words where I said of silly errors. These are the silly errors of the Aravali Arrows. No coordination, no combination, fighting around amongst each other, fake claiming points, over aggression. Doesn't work. Doesn't work at all. And look at this, Navneet. If I tell the numbers, you'll be really shocked. Nilgiri Knights just got 36, so minus 10. So that's 26 points in the second half. Can you believe this? 26 points in the second half, and the Aravali Arrows got only 14. So, we always say, right, in a blockbuster movie, the second half should be strongest than the first half. And Nilgiri Knights have today given us a blockbuster of a match. जी, अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो क्या शानदार स्क्रिप्ट है इस मैच का. बहुत बार ऐसा हुआ, सीसॉ हुआ, और आखिरी में मैं जब बात कर रहा था, नवीन आपको याद होगा 11 मिनट बचे हैं, क्या हमें वो रोमांचक मैच देखने को मिलेगा? तो रोमांचक ही नहीं, उससे भी ऊपर रोमांचक देखने को मिला है. और आखिरी जो 30 सेकंड है, ऊट किस करवट बैठी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था. और अरावली जो कि राजस्थान में है और ऊट वहां पर जाने जाते हैं, और ऊट आज अरावलीज के खेमे में नहीं बैठी है, नीलगिरी नाइट्स के खेमे में बैठी है. 36 और 35. ये रहा स्कोर मैच समरी. 103 नंबर मैच में रेड पॉइंट बराबर, 22 और 22 टैकल पॉइंट बराबर.
9 और Yeah. 9 ऑल आउट एक बार ज्यादा हो गए और इसीलिए नीलगिरी नाइट्स को मिले 4 एक्स्ट्रास में 2 और 1 सुपर रेड 0-0 और सुपर टैकल्स अरावली 1 ये रहा मैच समरी Yeah, and I'm sure our content head Ashwin is listening to us. He would have also listened to yesterday's post show where we were speaking about Kabaddi Spirit Award. You know, for people who respect the mat, who respect the game, is something the Kabaddi Spirit Award will be thought about from the next season as Sahil Bagada becomes the best raider as we have in cricket for the fair play. We can't use the name fair play officially, so let's go out there and try something with Kabaddi Spirit Award is what me and Harshit spoke yesterday in the post show. I hope that has been thought about as Rajendra Bakar once again gets a high five. A second high five for him in a consecutive match, but not on the winning cause. In the last raid, Navneet, I just wanted, Sahil Bagada to put an empty raid out there. He could have just gone in, just got an empty raid and settled for a tie. The Aravali Arrows could have got 3 points out of it, but not to be. Next match, Periyar Panthers are going to face the informed Palani Tuskers at 6:30. This is also going to be a crucial crunch game. Just 20 minutes from now on in. Don't tune off from Fan Code. We will be back soon after this 103rd match, which is a 103% Paisa Vasool match. I'm Naveen Shorey alongside with Navneet. Thank you so much, guys. See you soon at 6:30.
Greed is evil. One more time it proved in Kabaddi. But a brilliant resurgence shown by the team of Nilgiri Knights to tie this match with a brilliant win. आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इस बेहतरीन मुकाबले में, जहां पर एक शानदार मुकाबला आप सभी को नजर आया था। मैच नंबर 103 इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हम सभी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो चलिए आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में जुड़ने जा रहे हैं none other than Mr. Mukund, lecturer and senior physiotherapist, JSS College of Physiotherapy. A huge welcome in the post-match presentation, sir. ये match undoubtedly what a brilliant game we have witnessed in this challenger round. One of the most amazing. But अंत में आते-आते दोनों ही टीमों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शेष बचे थे. But अंत में आकर नीलगिरी नाइट्स ने एक शानदार टैकल किया और जीत अपने पक्ष में वहां पर रखी। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच। वो रहेंगे अरावली एरोज के, जिन्होंने आज फाइटिंग स्पिरिट दर्शाई, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया। अनडाउटेडली साहिल बागड़ा 12 रेड पॉइंट्स आज अपनी किटी में जोड़े। आइए देखते हैं इनके प्रदर्शन को। और अब समय है यहाँ पर चलने की हमें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ। तो आज फिर से हाइट कम फाइट ज्यादा नजर आई है इस खिलाड़ी से और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आज फिर से बतौर डिफेंडर इस टीम के लिए किया है अपने इन्हें। तो वो थे अरावली एरोज के राजेंद्र बाकर, जिन्होंने प्राप्त किया शानदार हाई फाई। देखते हैं इनके भी लाजवाब और अद्भुत प्रदर्शन को। और अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो जिस टैकल ने यहाँ पर पूरी तरह से इस मुकाबले को बदल दिया, आइए उस अवार्ड की तरफ चलते हैं। और वो लगाया था नीलगिरी नाइट्स के एस मणिकंदन ने, जिससे पूरी तरह गेम बदला और अपनी जेब में मुकाबला किया नीलगिरी ने। आइए देखते हैं उस दमदार और शानदार टैकल को। So, आप ही का गेम बनाएगा यहाँ नेम, बट इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से आप सभी से यहाँ मैं इजाजत लेना चाहूंगा और जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ इन द नेक्स्ट मैच। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो क्या अद्भुत और अद्वितीय मुकाबला यहाँ पर आप सभी के समक्ष नजर आया, जहाँ पर अरावली एरोज भिड़ रहा था नीलगिरी नाइट्स के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, बिल्कुल अंत तक चला और अंत में आते आते इस मुकाबले का फैसला हुआ, जहाँ पर नीलगिरी नाइट्स ने मुकाबला जीता। बट अरावली एरोज से आज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आप सभी को नजर आया और पिछले कई मुकाबलों से जिन्होंने रेड में पूरी तरह से संभाले रखा है अपनी टीम को, वो है साहिल बागड़ा। आज मेरे साथ साहिल बागड़ा मौजूद है। सबसे पहले साहिल, बहुत अच्छा आज आप खेले, 12 रेड पॉइंट्स आज आपने अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। साहिल, क्या कहना चाहेंगे, आज की परफॉर्मेंस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और आप अपनी परफॉर्मेंस को आज कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ और मतलब टीम के लिए इतने स्कोर कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है। साहिल, आज का मैच हमने देखा जहां अंतिम रेड तक पहुंचा, वहां आपके पास दो ऑप्शन थे। या तो एक पहला ऑप्शन था कि आप टाई कर सकते हैं उस मुकाबले को, या दूसरा ऑप्शन था आपकी एक ट्राई कर सकते हैं जीत के लिए। तो वहां पर आपकी क्या सोच थी जहां पर नीलगिरी नाइट्स के डिफेंस ने आपको पकड़ा? मुझे लगा कि मैं पॉइंट ला सकता हूँ, तो फिर मैंने ट्राई कर ली। सब मना कर रहे थे, लेकिन एक एक टीम के अंदर वो भी होता है, एग्रेशन भी होता है, तो वो था, गुस्से में कर ली ट्राई और कैच लग गई। और साहिल, आज आपकी टीम में कुछ हीटेड मूवमेंट्स भी नजर आए, कई बार प्लेयर्स एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए नजर आए, जैसे आप और रोहित बेनीवाल काफी समय तक वहां वार्तालाप कर रहे थे। तो कैसा आपकी टीम में कॉम्बिनेशन है? क्या फिर से वो भाईचारा आप में हमेशा रहेगा, वो ब्रदरहुड रहने वाला है, और क्या वही भाईचारे के साथ आज आपकी टीम भी आने जाने वाली है? टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस ये है कि सब एक दूसरे के से सुन के खेलते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाती है, कभी किसका दिन होता है, कभी किसका नहीं होता। तो बस यही है, आज डिफेंस थोड़ा कम था और टाइम पे सबसे गलती हो गई, हमसे भी हो गई, उनसे भी हो गई, बस उस वजह से ये मैच जीत गए। चलिए साहिल, लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से, कब से आप कबड्डी खेल रहे हैं, आपके फेवरेट कबड्डी प्लेयर कौन है और आप कबड्डी में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए वैसे तो, पर 1-2 साल कोरोना ये सब, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर 4 साल हो गए मुझे कबड्डी खेलते हुए और मैं पहली बार यही सीरीज़ खेल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है बस। और फेवरेट कबड्डी प्लेयर मेरा पवन है। पवन बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो पावरफुल रेडर है और मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ, पावरफुल रेडर। क्या तो हम भी यही चाहेंगे कि आप भी वैसी हाई फ्लाइज लगाएं, वैसे पावरफुल रेडर बने रहें। बट थैंक यू सो मच साहिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत मजा आया आपके साथ वार्तालाप करके। तो इस बेहतरीन मुकाबले में हमने जब देखा कि जहां अंतिम रेड में जाकर फैसला होने वाला था इस मुकाबले का, वहां पर साहिल बागड़ा चाहते थे पॉइंट लाना, बट एक अलग सोच थी इस एस मणिकंदन और पूरी नीलगिरी नाइट्स ये मुकाबला अपने पक्ष में किया। मेरे साथ यहां पर मौजूद है एस मणिकंदन। बट एस मणिकंदन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका ये रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड में, अगर हम इससे पहले देखें बूस्टर राउंड में आपकी टीम पूरी तरह से विजयी रही थी, यानी कि पूरी तरह से जीत के साथ आ रही थी। यहाँ पर आके 2 मैचेस आप हारे हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन उस तरह से वर्क नहीं किया, तो क्या वजहें लगी, क्या रीजंस आपको लगे? ஃபஸ்ட்டு வானசரியிலேருந்து எல்லா ரவுண்டையும் நல்லா கான்ஃபிடன்ஸாக எடுத்தோம். அந்த ரவுண்டு வந்து கொஞ்சம் எல்லா டீமையும் ஜெயித்திடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்துச்சு. அதனால் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டுங்கிற இதில் ஃபஸ்ட் 2 ரவுண்டு விட்டுட்டோம். இந்த ரவுண்டு ஜெயித்தே ஆகணும், எல்லாம் மீதி இருக்க 4 ரவுண்டு ஜெயித்தே ஆகணுங்கிறதுக்காக நல்லா விளையாடி ஜெயிப்போம்.
तो उन्होंने जिस तरह से बताया, अति आत्मविश्वास कभी कभार आपके लिए उतना बेहतरीन कार्य नहीं करता है, और ओवर कॉन्फिडेंस का इन्होंने रीजन बताया। बट अब आई होप कि पूरी तरह से आपकी कॉन्फिडेंट भी होगी, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ होगी। बट अब एस मणिकंदन, आपके वो लास्ट टैकल पर आते हैं। साहिल बागड़ा, पहले बहुत सारे हीटेड मोमेंट्स उनके साथ थे, बट क्या सोच थी आपकी? क्या आप टाई पर संतुष्ट करना चाहते थे? हो सकता था कि साहिल इतनी अच्छी फॉर्म में कुछ पॉइंट भी ले जाते, तो आपकी क्या एनर्जी और क्या सोच थी? बाकी मेंबर से क्या बात हुई थी? ஃபர்ஸ்ட்டில் நிறைய டிஃபென்ஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டோம். கடைசியில் எப்படியாவது ஜெயித்தே ஆகணும், எங்களுக்கு இந்த மேட்ச் இந்த ரவுண்ட்லேருந்து 4 ரவுண்டு தொடர்ந்து ஜெயித்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லாவே இருந்துச்சு. லாஸ்ட் சைடு வந்து எப்படினாலும் நாங்கள் பிடிக்க தான் வச்சுருப்போம். கன்ஃபார்ம் யாராக இருந்தாலும், என் பொசிஷனில் யாராக இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் பிடிச்சி கன்ஃபார்ம் டீமை ஜெயிக்க வச்சுருப்போம். वाव, यानी कि प्री प्लानिंग और उसके साथ साथ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इन्होंने पहले ही जिस तरह से बताया कि अगर कोई भी लेफ्ट रीडर आता और राइट रीडर जिस प्रकार से साहिल बागड़ा वहां पर आए थे, तो वो टैकल के लिए निश्चित तौर पर जा रहे थे और बहुत अच्छा कार्य किया एस मणिकंदन। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट विन इन द चैलेंजर राउंड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
So match number 104, Palani Tuskers versus Periyar Panthers. आइए इस बड़े मुकाबले में बताएं आप सभी को कि Palani Tuskers जहां पर लगातार जीत के साथ आ रही है और Periyar Panthers जरूर पिछला मुकाबला हारी है, बट अब चाहेगा Palani Tuskers के जीत के रथ को रोका जाए इस बड़े मुकाबले में। समय है दोनों ही टीमों को मैच पर बुलाने का, तो चलते हैं टीम अनाउंसमेंट की तरफ। So it's the time to invite the team who are the unbeatables in this challenger round. They are the connoisseur of winning. Let's invite the team in the greenish color, Palani Tuskers. और आज इन दोनों टीमों के मध्य कोई भी कॉन्ट्रास्ट ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब अपने प्रचंड खेल को ला रहे हैं एक्सटेंसिवली टैलेंटेड पेरियर के पैंथर्स। सो आइए तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए उनका, पेरियर पैंथर्स। There we go, an exciting encounter is what we have up ahead against, where the Panthers are going up against the Tuskers. We see Ivory going up against Claws. What is going to prevail, we will know soon enough. However, the Palani Tuskers have been the team that's been dominant in this round, and we will take a look at their starting 7 in this matchup against the Periyar Panthers. In the corners, we will see Purushothaman and Vishwanath. Insides, M. Ram Kumar and Jayasurya Nagarajan. The covers, V. Arul Nanda and Ajay Mutaya, the captain. Not to forget, raiding in from the middle, we have Mukesh Kannan. The substitutes, we will see Stuart Singh, Pasupati, he will make an appearance for sure as well. Mani Kandan, Abhimanyu and Virudalai Vishwanathan. To introduce the starting 7 for the Periyar Panthers, we have the great and mighty Harshit. Hey there, Harshit. Hi Ryan, good evening. चलिए माइटी इवनिंग की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और देखते हैं कि ये शाम कैसे आगे की तरफ बढ़ेगी। पिछला मैच बहुत ही वंडरफुल था, तो इस वंडरफुल वेडनेसडे में एक बड़ा मैच रोहित यादव जहाँ पर पेरियार पैंथर्स के एक बड़े रीडर के तौर पर साबित हो सकते हैं। राहुल चौधरी बी एंड राइट कवर पर, लेफ्ट कवर पर भगत सिंह होंगे। रिजपाल जाट यहाँ पर राइट एंड पर होंगे। लेफ्ट एंड पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे गोपाल सिंह, यानी आज रोहित का साथ गोपाल निभाने वाले हैं रिजपाल के साथ। अनुज सैनी एक बार पुनः नजर आएंगे लोकेश गुसलिया के साथ। कानाराम चौधरी, नकुल सैनी, सरदार चौधरी, मोनू प्रसाद, मुकेश चौधरी। तो पिछले मैच से कुछ बदलाव यहां पर किए गए हैं टीम ने। और हेड टू हेड की बात करें रायन, तो 3 मुकाबले इन दोनों टीमों के मध्य अभी तक खेले गए हैं। पिछला मैच जरूर पेरियार पैंथर्स ने जीता था, बट पलनी टस्कर्स ने शुरुआती 2 मुकाबले जीते थे, ये ग्राफिक्स बता रहा है। Oh yes, Palani Tuskers have won the first 2 encounters. However, the most recent encounters gone in favor of the Panthers. We now take a look at the top 3 raiders of this edition. Of course, it's going to be Gagan Gowda. He hit the 200 mark, 210 raid points. He is just so dominant, isn't he? Right behind him, Sanskar Mishra, 163. And right behind Sanskar Mishra, just 4 points separating the two of them, we have Durgesh Kumar here, Harshit. जी हाँ, मुकाबले का अंतर थोड़ा सा ज्यादा है, पॉइंट्स का अंतर थोड़ा सा कम नजर आया दुर्गेश कुमार संस्कार मिश्रा में, पर दोनों ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें। और अगर अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो पिछला मैच में अंकित जाट और राजेंद्र बाकर का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नजर आया कॉर्नर्स पर लोकेश गासलिया यहाँ पर स्टैंड टॉल एंड स्ट्रांगली यहाँ पर टॉप डिफेंडर के तौर पर खड़े हैं और थोड़ा सा राजस्थान डाबी का यहाँ पर दबदबा रहा है इन टॉप 3 डिफेंडर्स में। Oh yeah, that's an interesting factor to put in there. The Rajasthan derby between the top 3 defenders and a very minute battle there. So it can go anybody's way. Not to forget, as the referee, Mr. Karim, put the toss up and the Palani Tuskers won the toss, which means the Periyar Panthers will initiate the raiding proceedings.
जी हाँ, पहली रेड यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से आने वाली है और पेरियार पैंथर्स के लिए मुझे लगता है कि क्या गोपाल सिंह, रोहित यादव वहाँ पर पहली रेड लगा सकते हैं। बट ये तय है कि जब वहाँ पर पलनी टस्कर्स के लिए रेड आएगी तो जयसूर्या नागराजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होगा। 17 मुकाबले 145 रेड पॉइंट्स और आज ये खिलाड़ी चाहेगा कि और बहुत सारे पॉइंट्स अपनी टीम के लिए बटोरे जाएं। पिछले मैच में बड़ी जल्दी थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद राम कुमार ने आकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और आज तो राम कुमार भी शुरुआती शाफ्ट में हैं। रायन, Yes, and of course, the man to watch out for definitely has got to be Lokesh Gosalia there in the corner, ready to hold on to your ankles, ready to dash you out. He's ready to do anything when it comes to defending, and he's been the key player for his team, and he will come out strong, hopefully. Not to forget the Palni Tuskers, 23 matches, 17 victories. Take a look at that dominance of theirs. They've been winning all throughout. Just 3 losses coming in and 3 ties. Not to forget a win percentage of almost 74. A dominant performance from the Tuskers here, Harshit. जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डोमिनेट किया अपने विपक्षियों को। और आइए आज से एक्सपर्ट प्रश्न में चलते हैं। अनन्या प्रतिम का वो प्रश्न था यहाँ पर, should Palani strengthen their defense department more as their raiding department seems sorted with the multiple options? देखिए, 3 रेडर और 4 डिफेंडर, ये आप अमूमन कॉम्बिनेशन देखते हैं, या फिर 2 रेडर, 1 ऑलराउंडर और 4 डिफेंडर, और वो 4 डिफेंडर आपको नजर आ रहे हैं। पुरुषोत्तम पल्लीवेल, विश्वनाथ विजय कुमार, अजय मुथैया, वी अरुल, नंदा बाबू, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ज्यादा एक एक्स्ट्रा डिफेंडर को खिलाकर जरूर अपनी टीम का बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। रायन, मेरा ये मत है, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? Oh well, I'm often an old school person when it comes to strategies. You know, you stick to the 3 and 4, and you can sometimes, it depends on the situation or depends on the opponent you're going up against. You might want to add on that extra defender if it's a strong raiding side. And however, we will take a look at the Periyar Panthers right now. 26 matches, just 16 victories for them. It's quite impressive. And the 10 losses, that's something they could have reduced because they had a few games that they gave away, and a win percentage of 61.54 here. जी, अच्छे मुकाबले रहे पेरियार पैंथर्स की, अच्छी टीम ये खेली है, डिफेंस ओरिएंटेड टीम खेलती है। अब रेडर्स रोहित और यशपाल के आ जाने के बाद ये टीम अच्छा कर रही है। आर पेरियार पैंथर्स द मोस्ट एग्रेसिव साइड ऑफ वाइकेस ऑन एंड ऑफ द फील्ड? त्रिशा सिंह, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, अग्रेसिव है, बट द मोस्ट अग्रेसिव साइड ऑफ वाइकेस की अगर हम बात करें तो जरूर पेरियार पैंथर्स, अगर आप ओवरऑल वाइकेस की बात करते हैं तो पेरियार पैंथर्स जरूर रही है। इस अगर हम एडिशन की बात करें तो पेरियार पैंथर्स अच्छी खेली है, जरूर थोड़ा समय अग्रेसिव रहे ऑन द फील्ड, थोड़े समय ऑफ द फील्ड, बट ये अच्छा मिला जुला सफर रहा है। रायन, Yeah, well, honestly, they have been the side to watch out for. I always say this, you know, in the summer edition of 2022, it was the Periyar Panthers that were aggressive, but they just couldn't get aggressive enough to win. So I'm sure they will be extra aggressive to go that one step further and win the trophy. या तो चलिए रायन, उस ट्रॉफी की तरफ चलेंगे इस मुकाबले को शुरू करके, काउंटडाउन को शुरू करके। तो चलिए आज देखते हैं कि किसके पास पॉइंट्स का पोजीशन अधिकतर तौर पर रहने वाला है, क्योंकि इस यूट्यूब में तो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाने वाले हैं जय कुमार साहब, और इनका स्वागत करते हैं और हमारे इस तमाम दर्शकों का फैन कोड पर स्वागत करते हैं। और आइए फैन कोड पर आप सभी को लुभाने के लिए और बहुत ही शानदार कमेंट्री करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वन मोर टाइम। रायन, स्वागत है आपका। Hello Harshit, yes, it's gonna be a great moment right now. I'm sure everyone on fan code has a enthralling game up ahead because the Periyar Panthers are known for their defense often, and the Palni Tuskers, as one of the questions came in, you know, they're a very raiding dominated side. So let's see how this game pans out. It's gonna be the Tuskers going in with that raiding fortress, and the Panthers waiting to hold their claws. They will not do it in this instance as Ram Kumar starts strong. 3 point.
वाह, Palani Tuskers, jersey Stormy number start. 9, Palani 55 and Tuskers 6 की out. हमेशा याद आती है हमें स्टॉमी सुधाकर से, और ये स्टॉर्म की शुरुआत इस मैच में राम कुमार ने की है। पहली रेड पता था लोकेश गोसलिया अमूमन वहां पर टैकल के लिए जाएंगे, कवर से शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर सपोर्ट की मांग कर रहे थे, पर बहुत अच्छा जग किया रायन। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही राम कुमार को टैकल करने लोकेश गोसलिया गए, उन्हें पता था एंकल होल्ड के लिए जाएंगे, राम कुमार ने तकनीक का इस्तेमाल करके जग किया अपने एंकल को और 2 पॉइंट और लेकर गए, क्योंकि भगत और राहुल चौधरी अटैक करने उन पे चले गए थे रायन। Indeed, that couple extra came in and gave the point, and what a way to start things off in the form of a super raid, and that will be followed by a tackle for the Palani Tuskers. It's a very good start for the Palani Tuskers and the Periyar Panthers under the pressure already. अरुल एस्टॉनिशिंग टैकल यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से रेडर शायद समझ भी नहीं पाया और उन्होंने सोचा था कि पहली सुपर रेड के बाद पलनी टस्कर्स इस तरह से अटैक करने वाली है, और मुझे लगता ओ ये क्या था, रिचपाल जाट को बाहर भेजा गया शायद डिफेंस को थोड़ा सा ये जी, क्योंकि पिछले रेड में 3 डिफेंडर बाहर चले गए थे, इसलिए सब्स्टिट्यूट कराया गया। सब्स्टिट्यूट करके किसे बुलाया गया है, हम एक डिफेंडर को शायद वहां पर देख पाएंगे रिचपाल जाट की जगह। अनुज सैनी क्या एक सुपर टैकल अप कर सकते हैं टीम की मोमेंटम को फिर से प्राप्त करने के लिए, अन्यथा जयसूर्य और पलनी टस्कर्स अगर शुरुआत में मोमेंटम बना लेती है रायन, तो उनके पास लगभग 60% पोजीशन चला जाता है मैच का। Wow, that's an interesting stat there, and yes, I mean it altogether calculatively makes sense, because you know when you start so strong, when you start so dominant, you often have control over the game, and that's what the Periyar Panthers need to do here, is to try and avoid, you know, giving away those points to Palani Tuskers. They need to play strategically, because the Tuskers can come out strong, and this is what you need to do. Rohit Yadav stepping in, Palani Tuskers defense there, making the error, and Rohit making full use of it. और रायन एक स्टैट्स में आपको देता हूं और बाद में आपको बताता हूं। जब मैं पिछले मैच में नीलगिरी नाइट्स के जीतने के पश्चात एस मणिकंदन से बात कर रहा था कि क्या हुआ था, जो आप वहां पर लगातार मैच 7 जीतने के बाद 2 लगातार मैच आप हारे, चैलेंजर राउंड में एक भी जीत आपको मिली नहीं थी, अब जाकर मिली वो भी अंतिम रेड में, तो क्या कमियां थी, पर यहाँ खामियों को भुगताया है। लोकेश गोसलिया ने टैकल को शुरुआत किया और एक बहुत ही अच्छा डैश आया राइट कॉर्नर अनुज सैनी से रायन। Finally, there we go. Lokesh Gosalia initiating things, and Anuj coming in at the right time and dashing him perfectly. Take a look at that. The raider almost got his leg across. However, his body was outside, and the Periyar Panthers have gotten a couple of points, and now they are trying to take charge of this game. The Palani Tuskers started out very strong with that beautiful super raid to start things off. But right now, the Periyar Panthers, can they show their true might? That's what we will find out. रायन, और मैं उस बात पे वापस चलता हूं। जब मैं एस मणिकंदन से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, उनका यही कहना था। और मुझे पिछले डिफेंस में जब पलनी टस्कर्स ने रोहित यादव को पॉइंट दिया, जयसूर्य नागराजन थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आए, क्योंकि उनसे हम अमूमन ऐसी गलतियां नहीं देखते हैं। तो कभी कभार जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं विपक्षी टीम को ऑल आउट करने के लिए, तब आप ऐसी गलती कर बैठते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे राम जो हमारे ईवीएस ऑपरेटर हैं देवा, अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे तो जयसूर्य नागराजन का जो टैकल था ना रोहित यादव को, वो अगर हमें वापस देखने को मिल पाए रायन, तो उसमें आप समझ पाएंगे, क्योंकि हाँ अनुज सैनी बिल्कुल एक एम्प्टी रेड करने वाले हैं। उन्होंने बॉक लाइन के इतना ज्यादा आगे से आकर टैकल किया था जयसूर्य नागराजन ने, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच राम, देवा एंड आवर को प्रोड्यूसर मोहित। ये देखिए कितना आगे से रायन, बिल्कुल आसान सा रोहित एस्केप कर गए वहां पर। तो इस तरह की ओवर एक्साइटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है कबड्डी में। Yeah, that's a very important point stated there. Over excitement is not needed, because you know you have to be patient. You need to wait for the right opportunity to strike, and that's what Rohit has to do here. It's a do or die raid. He waits for the right opportunity. He waited for the defense to pound on him, and he gets back to the midline. And the Periyar Panthers get another point, courtesy of Rohit's raiding brilliance. जी हाँ, शुरुआती 2 क्रम में पलनी टस्कर्स को 4 अंक मिले थे। लेफ्ट रेडर जो लेफ्ट टर्न करके अपनी लॉबी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करे, वो एक शानदार लेफ्ट रेडर होता है। और रोहित यादव में वो मल्टीपल स्किल्स नजर आती है रायन। हमने पहले जयसूर्य नागराजन के विरुद्ध इन्हें एस्केप करते हुए देखा, जहां पर वो स्लाइड जंप थी, उसके बाद हमने एक और बार इनके क्रम को देखा, इस बार इन्होंने टर्न किया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बहुत ही अच्छे रेडर हैं, बट यहाँ लोकेश गोसलिया आज थोड़े से डेस्परेट नजर आ रहे हैं पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए, थोड़े से स्वैम्ड लग रहे हैं। Yeah, I mean, even I think along with the desperation is just that he knows he's the captain, and he is the key player. He needs to take the responsibility on himself to initiate several tackles, and I think that's where he's making the mistakes. I'm sure the coach would just go in and tell him, Lokesh, don't worry, you just need to be there, give confidence to the players. You don't have to throw yourself in for every tackle.
and the right tackles will definitely come for him as Rohit Yadav steps in once again. जी अब रोहित यादव आए हैं, ये अच्छी सेंसिबल रीडिंग यहाँ पर, क्योंकि 5 का हाउस था और 5 का हाउस में ज़्यादा अंदर जाने की आपको आवश्यकता है नहीं रायन, क्योंकि आपको बहुत ही फायर्स डिफेंस नजर आता है पल्ली टस्कर्स का। जिस प्रकार से अरुल आनंदा ने शुरुआत की है, अरुल नंदा बाबू ने एक शानदार डबल थाइस पर गए थे, कुछ गलतियां भी जरूर हुई है। अब जयसूर्य नागराजन क्या अंदर जाएंगे, अनुज सैनी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पर एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शायद मोनू आपको नजर आ रहे हैं, रिचपाल को सब्स्टिट्यूट किया गया है पेरियार पैंथर्स ने बड़े शुरुआती क्षणों में। अब अनुज शायद एक एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। Yes, the tempo of the game right now being set. It was started on a very high note when that Super 8 came in, but the game is just slowed down completely as we are almost 7 minutes into it, and this is an exciting encounter. The Palni Tuskers have never lost in this round, and they started the game with that momentum coming in, whereas the Periyar Panthers have had a lot of bumps along this entire road. But they are also a team that has beaten the Palni Tuskers once in this edition in their previous encounter. They are looking to tie the battle. We now have a do-or-die raid. जी रायन, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली बार पल्ली टस्कर्स को हरा कर आ रही है टीम, तो इन्हें पता है कि कैसे गेम को फ्रेम अप करना है। बट मैं चाहता था कि अनुज सैनी पिछली रेड में नहीं, रोहित यादव को जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अनुज सैनी गए, थोड़ा सा प्रेशर रोहित यादव पर अब डुआ डायरेक्ट में ज्यादा होगा। एक बहुत ही अच्छी किक लगाने का प्रयास है पुरुषोत्तम पल्ली वेल पर। अजय मुथैया का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एज ए लेफ्ट कॉर्नर उन्हें टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर रोहित यादव। क्या रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया है, पूरन शेखावत खुश है, पूरा अरीना यहाँ पर खुश है। बहुत अच्छा एस्केप किया रोहित ने और सुपर रेड का बदला सुपर रेड से लिया है पेरियार ने। Oh yes, I'm sure the arena must have exploded, because when you get to see such beautiful raids, attack the left corner, the hold was nowhere. He just got through him, and the dash from two of them not good enough to stop Rohit. And Rohit is on a roll here. What a start from Rohit here, Harshit. आज एक मिशन के साथ आए और प्लान के साथ आए। ये खिलाड़ी डिसेप्टिव है, बहुत अच्छी कार्य करता है। अनुज सैनी, लोकेश कुसलिया, वन ऑफ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कॉर्नर। क्या एक बार फिर से जैसे अनुज सैनी को आते हुए देखा एस मुकेश कन्नन के विरुद्ध, लोकेश कुसलिया ने तुरंत उनके पैरों पर डाइव लगाई और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड डिफेंस नजर आता हुआ फिर से रहा है। तो पेरियार पैंथर्स पहले पिछड़ने के बाद बहुत अच्छा क्रम में वापस आए। अब अरुल नंदा बाबू कोशिश जरूर करेंगे सुपर टैकल करें, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि रोहित ने कहा कि टू टच से बचिएगा मेरे। 1+3 point Periyar Panthers all out Palni Tuskers. Just wow, look at this. When the Palni Tuskers started on minutes 4-0, and the Periyar Panthers are the team to inflict the first all out. You know, this is beautifully done, and kudos to the Periyar Panthers team. Kudos to their coach also, who made the substitution when they were down to 3 men. He made the substitution to bring in an extra defender, and this is smart thinking from the team as the Palni Tuskers get a bonus. जी एक्सेंचुएट शुरुआत यहाँ पर, महत्व देना पड़ेगा पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर, और यही आपको प्रदर्शन दिखलाना होगा अगर आप पल्ली के विरुद्ध अपना जीत का विरासत प्राप्त करना चाहते हैं, अफसाने लिखना चाहते हैं। बट अब देखते हैं कि रोहित यादव ये फ्लाइंग थोड़ा सा लेंग पूरी तरह से लेट जाते हैं लेफ्ट कवर पर अटैक करने के लिए, बट अजय मुथैया क्योंकि बिल्कुल हाईलाइन नहीं खेल रहे हैं, और रोहित यादव इस बार वाइज काम किया, एम्प्टी हैंडेडली वहां पर वापस आए। Yep, empty-handed indeed. And speaking of empty, Harshit, I see the stadium is getting more and more filled every day as you know, the Yuva Kabaddi progress. So could you please give us a little more insights as to how the atmosphere has been and what the atmosphere right now? Chamundi Vihar Stadium has another super. Oh no, it won't be a tackle because he crossed his hand, and it should be a couple of points if I'm not wrong there. जी हाँ, जयसूर्य नागराजन एक बार फिर से अनुज सैनी यहाँ पर सिंगल थाइस पर गए थे। भगत सिंह थोड़ा सा डायरेक्शन को बदलने में पूरी तरह से वहाँ पर कार्यरत साबित नहीं हो पाए। जयसूर्य नागराजन ने अपना डैंगलिंग हैंड को निकाला और उसके पश्चात 2 पॉइंट लेकर राहुल चौधरी, बीएन, शायद समीर, जय कुमार और काजल राणा यही यहाँ पर वार्तालाप करें रेफरीज के पैनल में कि शायद राहुल चौधरी बीएन का भी वहाँ पर आ गया था। और 3 पॉइंट, तीसरी सुपर रेड रायन। ये मुकाबला भी शायद सिर्फ 10 मिनट का खेल खेला गया होगा और तीसरी सुपर रेड इस मुकाबले की ऑलरेडी आ चुकी है। My goodness, what is happening here? Super raid, and the first points of this match was in form of a super raid. I'm sure that was a sign that this entire game is going to be filled with super raids, but this is just halfway through the first half. Oh, we already have 3, and look at this, the score 10 each.
And I will get back to that question to you, Harshit, as to how the atmosphere has been in the Periyar Stadium. जी रायन, Right, अभी आपका ये प्रश्न one जैसा ही आपने point, कहा वैसे ही Pally रोहित पकड़े Tusker. गए और वही अरीना में आवाज गूंजी है जिस प्रकार से, खासकर अगर हम हम्पी हीरोज की टीम के Time सपोर्ट की out, बात करें Pally तो जब Tusker. हम्पी हीरोज खेलने आती है ना रायन, अगर मैं अरीना की बात करूं, गगन हो, शशांक हो, कोई भी रेडर अगर रेड पर जाता है ஆங்கிள் हम्पी செக் हीरोज பண்ணி ஆடு, के विरुद्ध, ஓகேவா? சரியா? पर पहले आइए அந்த லெஃப்ட் ரைட் முன்னாடி தான் மூவ் பண்றாங்க, இங்க எதுவுமே பண்றதில்ல. எண்ட் கேம்ல அவசரப்படாதீங்க, நாம தான் மைனஸ் பண்ணது. ஃப்ரெஷ் ஆடுங்க, புது மேட்ச்மே நினைச்சு ஆடுங்க, ஓகேவா? ஆடு ஃப்ரீ ஆடு, ராம் கிடைக்கலாம் கூட வா. कबड्डी सपोर्ट देना बेटा, सपोर्ट देना, ठीक है ना? ओके, तो रायन क्या मुकाबला रहा है ना ये। पहले पेरियार पैंथर्स ऑल आउट के आसपास थी, वो ऑल आउट से बचे, पलनी को ऑल आउट दिया और अब फिर से पलनी टस्कर्स पेरियार को ऑल आउट की तरफ धकेल रही है। तो मैं अरीना की बात कर रहा था रायन, आपके उस प्रश्न पर वापस आऊंगा, पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या राम कुमार इस बार लोकेश गुस्सलिया के एंकल से बच पाएंगे। फिर से डैश आया, बट इस बार लगता है कि राम कुमार 2 पॉइंट्स लेकर चले जाएंगे। तो मल्टी फेसिलिटी प्लेयर, मल्टी पॉइंट रेड लगातार लगाता हुआ राम कुमार। 9 राइडर Indeed, and looks like the Periyar Panthers want to contend and challenge the decision. I'm sure players might not have seen it, but I think it is Raider safe there, Harshit. Periyar Panthers challenge is Raider out. Our decision, Raider safe 2 points. Please review. ओके, तो यहाँ राम कुमार को 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पहले देखिए किक लगाई थी, उसके बाद शायद लॉबी में चले गए थे राम कुमार। उसके पश्चात यहाँ डैश आया, डैश का कारगर साबित हो पाया था। क्या बाहर से हाथ आया है रायन, अगर ये हाथ बाहर से आया है या फिर थ्रू दी लॉबी आया है, ये हमारे जो टीवी रेफरी है रामबीर साहब इसे तय करेंगे। जरूर दोनों की पोजीशन देखिएगा, पूरी तरह से दोनों ही वहां पर हवा में थे रायन। तो ये देखते हैं कि निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, पर ये डैश अच्छा था और राम कुमार ने भी देखिए जिस प्रकार से एरोप्लेन जब टिल्ट होता है थोड़ा सा, अपनी विंग्स को उसी प्रकार से घुमाया राम कुमार ने। Yeah, I mean, his body was in a certain direction and his upper body, you know, including his arms, were tilted to another direction. So that's good effort. But yes, I'm sure this is going to be a very close decision, and I'm sure our TV umpire will come out with the best decision with his experience, of course. जी हाँ, काफी अनुभवी हैं रामबीर साहब और Review successful. रिव्यू सक्सेसफुल। जी हाँ, यहाँ पर रेडर आउट हो जाएंगे। परफेक्ट रिव्यू पेरियार पैंथर्स ने लिया। मैं कहने वाला था कि क्या वहां पर पेरियार पैंथर्स ने सही समय पर रिव्यू लिया है, और बिल्कुल इस रिव्यू को सही समय पर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा क्षण था। और देखिए पहले उनका पैर बाहर जा चुका था। रामबीर साहब बहुत ही अच्छा निर्णय, क्योंकि कोई भी क्षण, कोई भी पार्ट लॉबी में नहीं था राम कुमार का। राम कुमार बाहर गए हैं, पेरियार पैंथर्स फिर से ऑल आउट से थोड़ा सा बचे। क्या गोपाल सिंह अपना पहला रेड पॉइंट इस मैच में, इस रेड में प्राप्त कर लेंगे? थोड़ा सा बचना होगा उन्हें भी विश्वनाथ से और साथ ही साथ अरुल नंदा से। Yep, they're two very versatile and defenders who are very alert, you know, so you can't slack off for a very small second there, because that's when they might catch you. And the same thing goes for the key defenders in the Periyar Panthers. You know, you have Anuj there, you have Lokesh Gosalia there, a lot of names that can, you know, all of a sudden come in and stun you. Speaking of stunning, once again, you have Mukesh Kannan who comes in and, you know, changes the course of the game, as it's a 1-point lead for the Periyar Panthers, courtesy of that super tackle which they got right before this, almost a minute back, that got them back the lead. However, this game has gone back and forth. You know, it's been the Palni Tuskers, Periyar Panthers, and that's how the history has been between these two teams. So it's going to be interesting right here in this round, because the stakes are much more high. जी हाँ रायन, पहले 2 मुकाबले पलनी टस्कर्स ने जीते, उसके पश्चात पेरियार पैंथर्स ने जीता। तो ये देखना होगा कि क्या पेरियार पैंथर्स बराबरी कर लेगा इस राइवलरी में। अब शायद दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेल रही हैं। यहाँ पर देखिए मास्क मुकेश कन्नन वहां पर जाएंगे, आसानी के साथ बॉकलाइन को पार किया। गोपाल सिंह को लोकेश गुसेले समझा रहे हैं कि कहाँ अटैक करना है आपको डू और डाई रेड में, क्योंकि रोहित यादव बाहर है। गोपाल सिंह पर वो जिम्मेदारी होगी आफ्टर इंजरी। इनकी नीज में कुछ इंजरी थी रायन, शुरुआत इन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी की थी, उसके बाद इंजरीज ने इन्हें थोड़ा सा परेशान किया। अभी विश्वनाथ मोहन से क्या बच पाएंगे, अरुल नंदा बाबू से थोड़ा सा बच पाएंगे। राइट कॉर्नर पुरुषोत्तम बल्लीवेल पर यहाँ पर अटैक करने का प्रयास, इधर उधर भागे बिना क्या कार्य कर सकते हैं अरुल नंदा बाबू। जानते थे गोपाल सिंह उन पर अटैक करने आएंगे, एंगल को कट करने आएंगे, एंटी ब्लॉक किया, हल्का सा टच किया और लॉबी की तरफ गए। Yep, Gopal there going
crazy, let's say, in terms of scoring points. And now a do-or-die raid, and it's Mr. Jayasuriya Nagarajan who's come in. He's very experienced, and he was the player to watch out for coming into this match. So he definitely could be the key one, but he was the player to watch out for. The player to watch out for in the Periyar Panthers, Lokesh Gosalia, has come in and stopped Jayasuriya. The powerhouse. हमने बुलडोजर को देखा है किस प्रकार से बुलडोज कर देता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को। यहाँ पर लोकेश गोसलिया नाम की बड़ी बिल्डिंग को इस जयसूर्या नामक बुलडोजर ने पूरी तरह से बुलडोज ध्वस्त कर दिया है। क्या क्रम किया, देखिए अच्छा ब्लॉक था। मैं लोकेश की जरूर तारीफ करूंगा, बट 4 डिफेंडर मिलके नहीं रोक पाए और जयसूर्या को यहाँ पर डायरेक्शन में बदलाव नहीं कर पाए। क्या टर्न किया, एक्सप्लेन कीजिए। Indeed, and I'm out of words right now, Harshit, because I honestly didn't realize that took place, and I'm sure none of the defenders realized, because take a look at that. There were 4 of them touching him and stopping him there, and I'm sure they also would have thought that they were successful, but they were not. And that is why the Palani Tuskers have gone back up in this match by 2 points, and Gopal here has the onus once again to save his team. ओह क्या बात है, मजेदार क्या मैच चला है। गोपाल सिंह रिवाइवल, कोई भी टीम खासकर पेरियार पैंथर्स ऑल आउट की तरफ नहीं जाना चाह रही है, ऑल आउट नहीं होना चाह रही। तीसरी बार बचे यहाँ पर पेरियार पैंथर्स। इस बार फिर से पहले गोपाल सिंह को अरुल नंदा बाबू ने शिकार बनाया था, उसके बाद लगातार 2 बार गोपाल सिंह ने उन्हें शिकार बनाया, पीछे नहीं जा पाए। सरप्राइज अटैक किया गोपाल सिंह ने। वेरी गुड वर्क गोपाल। राहुल चौधरी बीएन का रिवाइवल हुआ है। जयसूर्या नागराजन फिर से किक आई है और अब लगता है कि गोपाल सिंह को शायद पॉइंट न दे पलनी टस्कर्स। Yep, and the previous super raid by Jayasuriya was the 4th one, Harshit, the 4th super raid in this match, and we still haven't crossed halftime, and we have 4, so I'm sure we can check with our brilliant team, Ashwin, Mohit, and everybody as to what's the highest number of super tackles, super raids that's happened in one match, and let's hope that this game could entertain us and also cross the record and set a new record for which Gopal here would have to change things. वाओ, जस्ट वाओ रायन। देखिए गोपाल सिंह पिछली 2 बार उन्होंने हैंड टच किया, एक बार एंटी ब्लॉक किया था, एक बार हैंड टच किया था, इस बार टो टच किया, तो हर बार कुछ अनप्रेडिक्टेबल मूव्स के साथ आ रहे हैं गोपाल सिंह। अच्छा स्ट्रेच करते हुए, ये है इस खिलाड़ी की काबिलियत। फिर से एक मौका दिया है, अब राम कुमार गए। ओ रोहित यादव को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था किसी डिफेंडर के साथ। रोहित यादव पीछे चले गए, पीछे चले गए। मोहन गौड़ा साहब का हाथ आ गया था, और हाथ ना भी आता तो भी राम कुमार यहाँ पर अपने आप को बचाकर एक और 2+2 पॉइंट रेड आ गई है रायन। पर जो आपका प्रश्न था, हेड्स ऑफ रायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अश्विन और मोहित अगर इसका जवाब निकाल पाए तो प्लीज, कि इससे पहले समर एडिशन 2023 में किस मैच में सर्वश्रेष्ठ सुपर रेड्स लगी हैं? Yep, and the all-out has been inflicted on the Periyar Panthers. Palani Tuskers have come back to get the all-out here once again. So this is going to be the story of the game. Let's hope so, because we would want the Periyar Panthers to come back once again and do the same thing, because that's the tempo of this game. And the Panthers should ensure that they don't give too much of freedom to the Palani Tuskers to continue this dominance. As the point has been claimed, doesn't look like a point is given. Yep, no point is given, and we move on. जी पर रायन देखते 5 पॉइंट की लीड पल्ली के पास हो गई है, तो अब देखते हैं पल्ली टस्कर्स की टीम क्या मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो डाउन करने का प्रयास करेगा, या फिर पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध और अटैकिंग मोड में जाएगा। जयसूर्या नागराजन जो उन्होंने पॉइंट्स मिले ना रायन, तो पेरियार पैंथर्स के डिफेंस में ये गलती रही कि उनकी डायरेक्शन को बदल नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर जयसूर्या नागराजन जैसा पावरफुल डिफेंडर हल्का सा फिंगर टच हुआ, भगत सिंह सोच रहे थे आऊं ना आऊं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रम को किया और पूरी तरह से अपने लिए क्रम को बिठाया। Yes, take a look at that, using his left hand, running in quickly and getting that touch point. And the Palani Tuskers are slowly settling into this game, and they will look to take it away from the Periyar Panthers. You know, you need to make it as difficult as you can, especially a side like the Periyar Panthers who will score points like this. Take a look at that. I think he crossed the line, and yes, looks like he has crossed the line, as we can see the referee, the umpire, they're counting the number of bodies that is to go out. Leadership, 1 point. Oh, 1 point. यहाँ पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। वी विश्वनाथ इस बार थोड़े से बहुत ज्यादा एडवांस टैकल के लिए, क्योंकि अभी तक कवर पर अटैक कर रहे थे गोपाल सिंह, फिर से गोपाल सिंह कवर पर अटैक करने जाते उससे पहले क्योंकि जर्सी पुल था,
देखिए विश्वनाथ ने यहाँ पर पूरी तरह से जर्सीज को खींचा था, शॉट्स को खींचा था, इसी के चलते वहाँ पर गोपाल मिडलाइन को नहीं क्रॉस कर पाए, बट गोपाल के खाते में पॉइंट गया है। और जब मिडलाइन कितना पास होता है ना रायन, मैं थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले वहाँ पर हमारे टीवी रेफरी रामवीर सिंह साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि अगर इतने पहले अगर जर्सी पुल किया जाता है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट अगर मिडलाइन के आसपास वो जर्सी पुल हो तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट बनता है। यहाँ जयसूर्य नागराजन पहले उन्होंने बताया कि मैंने अटेम्प्ट किया है आप पे टच का, उसके बाद जयसूर्य नागराजन ने माना कि चलिए नहीं हुआ है। Yep, that's similar banter that happens. We now have Rohit Yadav coming in for the Periyar Panthers. 6 points for him in this match so far. He would want to get a couple more and, you know, steer his team closer to the Palani Tusker score as we head into the first half. I don't think he will get a point in this raid. He's capable of going and getting it. He tries the bonus. Is the bonus given? No. रोहित यादव देखिए कैसे देख रहे थे वहां पर एक्सप्रेशंस। रायन, अगर उसकी फोटोग्राफ क्लिक होती उस एक्सप्रेशंस की, रेफरी से जिस प्रकार से वो मांग कर रहे थे, और अगर आपको कहा जाता कि उसे आप डिकोड करने का प्रयास कीजिए, बट डिकोड करेंगे उससे पहले राहुल बोलेंगे नाम तो सुना ही होगा। क्या शानदार अटैक आया राइट कवर से, सिंगल थाइस पर गए राम कुमार, पार एक्सीलेंस टैकल राहुल चौधरी का। इस बार राहुल कुमार जैसे रेडर को बहुत ही अच्छे अंदाज से शिकार बनाया इस बार राहुल ने। Yeah, rightly said. The way he executed it was so beautifully done, and there was no escape there as Richpal Jat comes in for the Periyar Panthers. 4 points separating them. This could potentially be the last raid of the first half. It depends on how Richpal Jat plays this raid out, and he's heading to the last 10 seconds with 3 seconds left in the game clock, and smartly done. It will be a 4-point difference as we head into halftime. Harshit. जी हाँ, पहला हाफ पता ही नहीं चला रायन, लग रहा था कि अभी 5 मिनट पहले तो ये मुकाबला शुरू हुआ था, बट जी नहीं, 20 मिनट हो चुके हैं, पहले हाफ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 21-17 का स्कोर है, जहाँ पर पलानी टस्कर्स 21 पर है, 17 पर पेरियार पैंथर्स है। रेड पॉइंट्स रायन, अगर मैं रेड पॉइंट्स देखूँ तो पूरी तरह से कहाँ अंतर है वो हमें पता चला है। रेड पॉइंट 16 है वहाँ पर पलनी के पास और सिर्फ 9 है पेरियार के पास, बट टैकल पॉइंट्स 5 है पेरियार पैंथर्स के पास और सिर्फ 2 है पलनी के पास। ऑल आउट और एक्स्ट्रास बराबर है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी जल्दी आप सभी के साथ मिल रहे हैं सेकंड हाफ में। जी आइए तो एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस हाई थ्रिलिंग एंटरटेनिंग और एंथ्रॉलिंग मैच में, जहां पर ऑलरेडी पहले हाफ में रायन कितनी शायद 4 सुपर रेट्स हमें नजर आ चुकी हैं और शायद जिसमें से 3 पलनी टस्कर्स की आई है और कच्ची रहे हैं 16 रेड पॉइंट्स अगर मिले हैं तो राम कुमार जयसूर्य नागराजन क्या 4 पॉइंट क्रम उन्होंने लगाया। ये राम कुमार की एक बड़ी क्रम था जहां पर एक अच्छा डैश था, इससे पहले राम कुमार की वो सुपर रेट थी, बट रोहित यादव ने भी अच्छा किया है कई क्षणों में। वी विश्वनाथ उतने इनफॉर्म नजर नहीं आए हैं और इसी वजह से सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स मिले हैं। ये रोहित की एक शानदार सुपर रेट थी। तो रायन, ये मुकाबला है पलनी टस्कर्स के रेडर्स बनाम पेरियार पैंथर्स के डिफेंस के विरुद्ध। Indeed, that's the most accurate way, especially an encounter like this, where, you know, we see a side like the Palani Tuskers. They're filled with raiders. You know, we can take a look at this, how in this match itself, you know, they've come one after the other and put out the challenge, but it's the defense of the Periyar Panthers that can change things for them. Both their corners very much active. We know Lokesh Gosalia is there, we know Anuj Saini is there, so it's going to be very interesting, and I'm sure right now they have to come out strong. The Periyar Panthers will need a few more raids to come in order to change the course of this game, because the Palani Tuskers are up by 4, and let's see what happens here in the second half. I'm excited. और लगभग 3 से 4 सुपर रेड यहाँ पर जो पलनी टस्कर्स के लिए आई है रायन, उसको अगर आप छोड़ दें तो टच पॉइंट जयसूर्य नागराजन ने अच्छे प्राप्त किए, बट अगर ये देखिए एक और बार फिर से अनुज सैनी एडवांस टैकल, जयसूर्य नागराजन को आप फिर बोनस लेने दीजिए या उन्हें अटैक करने दीजिए। अगर आप उन पे पाउंस करेंगे तो जयसूर्य नागराजन की जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग अबव 100 पहुंच जाती है जब कोई इन पे पाउंस कराए।
Oh wow, that's an interesting fact there, and I'm sure if that is genuinely a fact, players should know that. You know, they should do their homework and realize that you don't pound on a raider like Jayasuriya. You don't give it to him because he will always punish you and make use of it. Anyways, right now Gopal Singh comes in for the Periyar Panthers, and it doesn't look like he will start things off with the raid. And I don't see the Periyar Panthers going in for the bonus as well, Harshit. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बोनस का जो अहम थिंग है वो बहुत है। लीजिए जयसूर्य नागराजन सुपर 10 अपना बना चुके हैं, 10 के 10 टच पॉइंट्स आए हैं। इसका एक और मतलब है कि एक भी बोनस नहीं है कि जयसूर्य नागराजन जो बोनस बहुत अच्छा चुराते हैं उन्हें ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। भगत सिंह ने वही करने की जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, वहां पर मोनू प्रसाद के शायद उन्होंने वही कोशिश की जो राम कुमार के विरुद्ध राहुल चौधरी ने की थी। बट जयसूर्य नागराजन फिर से वही स्टेज की जो हम बात कर रहे थे, अगर आप उनके ऊपर ज्यादा जल्दी टूट कर पड़ेंगे और खासकर इतना आगे से, तो जयसूर्य नागराजन हमेशा पॉइंट पलनी टस्कर्स को दिलाएंगे। Yeah, and the Periyar Panthers should be much more alert in this match. You know, they should realize that they are trailing, and one more all-out would increase the difference of this game up to a significant point difference. And the Panthers should ensure that the Palni Tuskers don't go too far away because they are a raiding team. They do get a lot of points through raids, and they will continue to do so. So you can't slowly let go of this game. You can't let this game slip in any which way. और पेरियार पैंथर्स 2 एम्प्टी रेड कर आए हैं। रोहित यादव थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था, वहां पर एक लेफ्ट रेडर रोहित आपको नजर आते हैं, एक राइट रेडर गोपाल सिंह आपको नजर आते हैं। अब राम कुमार है। पिछली 2 रेड में पलनी को 2 पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर, और सेकंड हाफ में 2 पॉइंट ऑलरेडी अपने रेड पॉइंट्स के चलते अर्जित कर चुका है। तो पेरियार पैंथर्स को ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि पलनी का डिफेंस थोड़ा सा वीक खेल रहा है अभी, और लेफ्ट फ्लैंक पर अगर आप वी विश्वनाथ को देखेंगे तो उनका भी इतना अच्छा क्रम नहीं रहा है, आज उतने अच्छे साबित नहीं हुए। रिच पाल जाट अभी तक रिच इन पॉइंट्स रहते हैं, पिछले मैच से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पर यहाँ बिना टच के लॉबी में चले गए, ओवर स्पीड हो गए वहां पर। अक्सर रायन आप कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स सम टाइम। Yeah, that's a very nice way to put it. Speed thrills but kills. He just couldn't control himself there, and he slipped into the lobby, which is why he had to go back. And a point gifted to the Palni Tuskers, 7 points. And the Periyar Panthers now with a couple of 2s in their defense. This is often the best form of defense, but some raiders have the skill. Ram Kumar has the skill to break this sort of defense and gets the point. Yeah, I know this is all about the momentum. पेरियार पैंथर्स थोड़ा सा मोमेंटम में लैग कर रहा है, और पलनी टस्कर्स उसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए आइडलिक काम मैं कहना चाहूंगा पलनी टस्कर्स के रहा है कि वो मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। लीड है अब 8 पॉइंट की हो चुकी है, उसके बावजूद 7 पॉइंट की लीड के बावजूद राम कुमार ने ये नहीं चाहा कि मैं एक एम्प्टी रेड लगा कर आऊं। मोमेंटम को पेसअप करना बेहद जरूरी है, और मोमेंटम कबड्डी में बहुत कुछ होता है। कबड्डी का हमने जो खेल देखा है वो बहुत ही परिपूर्णता के साथ देखा है, पर यहाँ से गलती हुई है, और मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई रेडर मौजूद था। रोहित ने अच्छा अटैक किया उन पर, और रोहित को यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। पहले हाफ के पश्चात ये पहला पॉइंट आया है दूसरे हाफ में रायन के लिए। Yep, the Periyar Panthers scoring the first points in the second half, and it's good to see it coming in the form of a raid because the defense was not clicking at any point of time ever since the second half started. So let's hope it's their raid points that actually motivates and accelerates the defense to come in and score points. But scoring points against Jayasuriya Nagarajan is a tough task. It is a very tough task because even Lokesh Gosalia couldn't stop him. जैसे नंबर 9 आउट। फिर से रायन देखिए, जयसूर्य नागराजन को बिल्कुल भी अंदर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी है पिछली 3 रेड्स में। वो बॉकलाइन के आसपास खेले हैं और डिफेंस उनके ऊपर टूट पड़ा है, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कप्तान को, खासकर लोकेश गुसलिया को। अब सिर्फ फिर से 3 खिलाड़ी मौजूद हैं पेरियार पैंथर्स के लिए, तो जो ऑल आउट का जो खतरा है ना उसके आसपास पेरियार पैंथर्स नहीं जाना चाहेगा। हालांकि नंबर ऑफ सुपर टैकल्स है, मुझे लगता है कि शायद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर टैकल्स लगाए होंगे पेरियार पैंथर्स ने इन वाईकेएस समर एडिशन। यहाँ भी विश्वनाथ लगातार गलती कर रहे हैं, जो सिली एरर्स आपको पेरियार पैंथर्स से नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पलनी टस्कर्स भी वही सिली एरर्स करते हुए। एक बार फिर से रोहित यादव ने बहुत अच्छा टर्न किया और टर्न कर अपने टीम के लिए पॉइंट ले आए। Yes, I think it is going to be the raiding that's actually going to change or keep the Periyar Panthers alive in this match. But at the same time, it's the raiding of the Palni Tuskers that's kept them this strong. I think in the history of the Palni Tuskers, whichever edition they've been part of, the Yuva Kabaddi series, they've been known for being a raiding team.
and right now Jayasuriya's led them in that regard. I think he would have touched his 150 points. He was 145 and heading into this game, and now Jayasuriya has been tackled out. Amit Saini taking initiative, and this is a very big moment because they've taken Jayasuriya out, and the Palni Tuskers can possibly try and change things now. जी हाँ, क्या आप कैप्टिवेट कर पाएंगे इसे? और मुझे लगा रायन इस बार जयसूर्य नागराजन थोड़े ज्यादा अंदर चले गए, थोड़ा सा ओवर ट्राई उन्होंने इस बार किया। अन्यथा जब तक वहां पर बॉक लाइन के आसपास टीज कर रहे थे डिफेंस को, तो डिफेंस उनके ऊपर टूट कर पड़ रहा था। इस बार पेरियार पैंथर्स ने अच्छा कार्य किया, पेशेंसली होल्ड करके रखा। अनुज सैनी ने अपने आप को कई बार जयसूर्य नागराजन पर किक लगाने की कोशिश की, बट ओवर ट्राई ऑफ गेटिंग अ पॉइंट वहां पर जयसूर्य नागराजन ने किया और तुरंत अनुज सैनी अंकल के ले गए और अच्छा सपोर्ट वहां पर साथ ही डिफेंडर से आया। अभी भी 6 अंकों की लीड पलनी टस्कर्स के पास है। पेरियार पैंथर्स को रेड में पॉइंट लाने पड़ेंगे। रोहित और गोपाल सिंह को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि पहली डू और डाई रेड जो होगी वो पेरियार पैंथर्स के लिए आएगी, ये हमें तय पता है। Yeah, that's fair. That is possible, and that is most likely what's going to happen. And right now, the Periyar Panthers here would just want to ensure that they don't rush into getting that points, because they know they're down. Sometimes they're in that hurry to get a point, and that's when they make a mistake. And it looks like a timeout is taken from the Periyar Panthers. A good decision, and we will listen to what their coach has to say. कंट्रोल सुन मेरी बात, सुन रुक जा, कहूंगा उसके गट्टा सुन बात तो सुन मेरी। ओए बिल्ला को मारा लेफ्ट में टूटेंगे वो, सेकंड इन मार पे थर्ड में मार, बार ट्राई करी पहली हैं, थर्ड बिल्ला जाओ। सुन 2 नंबर पर थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा अंदर 2 नंबर पर थोड़ा ध्यान रखे, है ना? सुने तू कर ले बिल्ला வைக்கிறோம்। डिफेंस और डिफेंस பண்ணுங்க। ओके, तो यहाँ पर काफी सारी वार्तालाप हुई। हमने पूरन शेखावत साहब को सुना और देवा जो हमेशा हमारे काबिल दोस्त नवीन शौरी कहते हैं कि ट्रेलिंग टीम को दिखाइएगा, देवा ने बिल्कुल वैसा ही किया। पेरियार पैंथर्स से कोच को सुनवाया हमें अच्छी तरह से, और उन्होंने यही कहा कि बिल्ला तू रेड लगा ले, यानी कि शायद रोहित यादव का जो निकनेम है वो कहीं ना कहीं कोच उन्हें बिल्ला नाम से बुलाते हैं। और क्या वो बिल्ला वाला काम कर सकते हैं? क्या वो पैंथर्स वाला काम कर सकते हैं? रोहित यादव लगातार पुरुषोत्तम पल्लीवेल के आसपास घूम रहे हैं। क्या अजय मुतैया थोड़े से वहां पर डाइसी साबित हो सकते हैं? क्या डैश कारगर साबित हुआ है? देखना पड़ेगा रायन, क्या या फिर ये एक और मल्टीपल रेड पॉइंट है इस खिलाड़ी के लिए? Oh, yes, I mean, this is what happens in this game as the referees right now are having chatter in between all of them, and I'm sure the verdict will be out soon. The players waiting in anticipation. The Periyar Panthers sincerely hope it goes their way, because that can again, keep them close and very much alive in this game. The Palni Tuskers, on the other hand, would not want this to happen. Oh man, I don't know. This is a big moment here, and it's good to see the referees making such decisions, talking to each other, because this is a very important decision. 1 point, Palni Tuskers. रेडर आउट रायन। पुरुषोत्तम ने पल्लीवेल का एक बहुत अच्छा डैश आया और पेरियार पैंथर्स के रिव्यू के लिए जा रहा है। रोहित जरूर वहां पर बाहर की तरफ जा रहे थे, पर शायद पेरियार पैंथर्स किसी खिलाड़ी ने कहा कि जिन्हें रिव्यू के लिए जाइए। रोहित यादव आप और समीर साहब जो कि मैच रेफरी हैं इस मुकाबले के, वो रिव्यू की मांग करेंगे। प्लीज गो बैक। टीवी अंपायर, Periyar Panthers challenge is Raider save 2 points. Our decision, Raider out. Please review. तो 2 पॉइंट्स की मांग है और मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या पेरियार पैंथर्स ने जज्बातों में बहते हुए रिव्यू नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ मास्क मुकेश को बहुत अंदर जाके रोहित यादव ने अटैक करने की कोशिश की। पुरुषोत्तम का कहाँ डैश आया, यहाँ स्पीड अप करने गए। क्या ओवररन करने दे सकते थे पुरुषोत्तम को? क्या हल्का सा पॉज रोहित यादव लगा सकते थे? क्या लॉबी में पूरी तरह से थे? क्या कोई कनेक्शन था? अगर थ्रू दी एयर भी आए हैं और थ्रू दी एयर के साथ साथ थ्रू दी लॉबी आए हैं तो भी हो सकता है कि ये रेडर सेफ हों, बट क्या मिडलाइन को पूरी तरह से क्रॉस किया है? ये भी एक बड़ा अहम इम्पैक्ट होगा रायन इस रेड में। Oh yes, it could. Very impactful as we wait for the verdict here. And Harshit, a question for you, since you've interacted with the players. What has been like, who do you think has there been a player with whom you have correlated with so much, in terms of how they've come up in their career, how they are heading in? Like, is there anybody who you saw glimpses of yourself in? वाओ रायन, बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रश्न पूछा है और मुझे थोड़ी सी दोहरी दुविधा में डाल दिया, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे वहां पर हैं। थोड़ा सा सोच विचार करने का थोड़ा समय दीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। Yeah, definitely. I mean, nobody is there. We often do that. We often look at players and we're like, okay, I see that spark in him, and I see a lot of
several aspects that I've seen in my career, same in him. And प्लीज आप अपना I'm बताओ sorry, कि it's, आप it's an open स्पोर्ट्स से question. बड़ा वहाँ पर क्लोज रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स आप लगातार खेले हैं, आप किस प्लेयर को लगता है कि आप में आपकी वो थोड़ी सी झलक, चाहे वो अग्रेशन से बात कर लें या फिर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर वो थोड़े से आपके साथ कोरिलेट करते हैं? और रिव्यू अनसक्सेसफul, 1 पॉइंट पलनी टस्कर्स, रिव्यू भी गवाया है, रोहित को भी गवाया है। यहाँ पेरियार पैंथर्स में दोहरी दुविधा खड़ी हो चुकी है रायन। Yes, indeed. Periyar Panthers, it's just hurting them even more right now. And coming back to what that question is, I think it is Jayasurya Nagarajan here because, Naveen had told me about how his father was a player as well. And he's here. So, I mean, I don't relate 100%, but I do love a moment when players, replicate what their father did. As Ram Kumar gets a point. And, oh man, the Periyar Panthers are just taking this game away now. जैसे नंबर 7 अनुज फिर से राम कुमार अटैक करते हुए डिसेंट अटैक किया, बहुत ही डिलीजेंटली यहाँ पर जा रहे हैं। और देखिए अनुज थोड़ा सा हाईलाइन थे, अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए और थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल हो गए। और जो पूरन शेखावत साहब के वहाँ एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरह से बयां कर रहे थे कि अगर ऐसे ही पेरियार पैंथर्स खेलेगा तो बड़ी जल्दी पलनी टस्कर्स इस लीड को और बढ़ा लेगा। और पूरन शेखावत ने एक बात कही थी यहाँ पर टीम के वहाँ पर कोच आउट में, यानी कि टाइम आउट में, कि आप अजय मुथैया को टारगेट कर सकते हैं। अजय मुथैया वहाँ पर दूसरे नंबर पर खेलते हैं और अजय मुथैया लगातार गलतियां यहाँ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एक और एक्स्ट्रा डिफेंडर को बुलाया पेरियार पैंथर्स ने, मुकेश चौधरी जो कि एंकल होल्ड के मास्टर हैं। पर जयसूर्य नागराजन बड़ी जल्दी आए, गोपाल सिंह बाहर हैं। रायन देखना पड़ेगा कि क्या जयसूर्य नागराजन को सुपर टैकल कर पाएगा या फिर जयसूर्य नागराजन इस बार ज्यादा अंदर जाए बिना अपनी टीम के लिए उखाड़ कर देंगे। Oh yes, Jayasurya Nagarajan, the man here comes in. If he gets tackled, it will be 2 points for the Periyar Panthers. If the Panthers can get this tackle point, it will change the game. Not a do or die rate, so they don't need to force any instant. ओके, तो जैसा हेड्स ऑफ हम जयसूर्य नागराजन को करते हैं जब वो रेड लगाते हैं, वैसे ही हेड्स ऑफ मैं बड़ा हेड्स ऑफ देना चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर अश्विन एंड को प्रोड्यूसर मोहित को, क्योंकि रायन जो हमने थोड़ी देर पहले हमारी स्टेट की मांग की थी वो स्टेट हमें तुरंत मिल चुका है यहाँ पर। और ज़रूर शायद उसमें थोड़ा सा साथ हमारे स्टेट्स को जो अक्षर लेखा जोखा रखते हैं वो वहाँ पर संगीत का भी थोड़ा सा शायद हो सकता है, मुझे लगता है साथ होगा। बट आइए मैं दर्शकों को वो स्टेट्स बताऊं उससे पहले ये राम कुमार ने भी माना है कि बहुत ही लीजेंडरी वर्क किया हमारे प्रोड्यूसर्स ने, बहुत ही अच्छा टर्न किया, बीच से गैप को निकाला, एस्केप रूट को ढूंढा और पतली गली से निकलते हुए 2 पॉइंट ले गए। Yep, come on Periyar Panthers, you guys cannot let this go here. You guys started so well and the referees will have chatter once again in regards to that moment, and I will let Harshit complete and tell what the records were in regards to the most number of raids, super raids. जी आयुष, बिल्कुल जी रायन, बिल्कुल उसके बारे में अब चर्चा करते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ देख रहे हैं कि क्या एक थोड़ा सा क्रम मांगा गया है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वहाँ पर डिस्कशन जारी होगा। पर चाहिए आइए, तो अभी तक इस मैच में हमें शायद रायन कितनी 4 सुपर हिट्स लग चुकी हैं। राइडर आउट ऑफ बाउंड, राइट आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट, सरप्राइजिंग रायन। मैच में अभी बहुत सारी दस्तकें शेष बची है, एक और बार कुछ बदलाव आया है। पलनी टस्कर्स के पास रिव्यू है और शायद पलनी टस्कर्स उस रिव्यू के लिए जा रहा है, बट रेडर आउट ऑफ द बॉन्ड कहना है हमारे मैच रेफरी का। Wow, what a turn of events. Periyar Panthers challenge is Raider safe. Our decision, Raider out of bound, 1 point Periyar Panthers. Please review. ओके, यहाँ हम देखते हैं पहले इस रीप्ले में कि क्या हुआ। क्या पहले बिना टच के लॉबी में चले गए? यहाँ क्या पहले टच आएगा? ओ जी बिल्कुल रायन, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है उनके राइट हैंड पे मैं ध्यान देना चाहूंगा। राम कुमार क्या दोनों एक साथ वहां पर गया और क्या व्हाइट लाइन के पीछे ब्लैक पार्ट में गया था, हल्का सा शू गया था रायन, मुझे ऐसा मेरी निगाहों से लग रहा है। रायन, आपकी नेकेड आईज क्या कहती है? Indeed, Harshit, I second your thought, and more than this right now, I'm just trying to give credit to the umpire on field there who noticed that, I mean, that shows the level at which Yuva Kabaddi series is, ladies and gentlemen. The umpire quality, just take a look at that. That is some next level spotting, you don't even need artificial intelligence for that. That is beauty and brilliance of the common human eye. जी हाँ, तारीफ करनी होगी यहाँ पर सभी रेफरीज की, बहुत ही शानदार
बहुत ही एम्पल डिसीजन यहाँ पर दिया और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जरूर राम Review कुमार सोच रहे हैं। रिव्यू अनसक्सेसफुल, पलनी ने भी अपना रिव्यू गवा दिया है। धीरज रखने की आवश्यकता थी थोड़ी सी, पर राम कुमार को लगा कि जी नहीं, पहले शायद मैंने टच किया है, उसके बाद मैं लॉबी में गया हूं। यहाँ राम कुमार सुपर टैकल हो गए, तो भगवान ने एक और मौका पेरियार पैंथर्स को दिया। या देखिए, किक लगाने नहीं गए, पहले लॉबी में उनका लेफ्ट लेग चला गया और रायन ये पूरी तरह से मैच फिर से बना है पेरियार पैंथर्स का। हालांकि पेरियार पैंथर्स और पलनी टस्कर्स दोनों हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम सुपर रेट्स के ऊपर बात करें। अरुल नंदा बाबू क्या हुआ किया, दोनों थाइस पर गए, रिच पाल को शिकार बनाया और फिर से पेरियार पैंथर्स को थोड़ा सा जोखे में ढकेला। Yeah, Richpal Jad there going in too much and running straight into the defender there, and a very good tackle for the Palni Tuskers yet again, as they will hold on to their lead, and there's plenty of time for the Periyar Panthers to come back. They just need a few key moments like the previous super tackle which got them 2 points. They will need one more, but it's Jasuria here who gets the point, kicking in style. 1 point. जयसूर्य नागराजन एक बहुत ही अच्छी साइड किक यहाँ पर लगाई। जयसूर्य नागराजन की पूरी निगाहें लेफ्ट अटैक पर थी और मोनू देखिए कहाँ खड़े थे, एटलीस्ट वो फियर अप ही नहीं करा पाए। और मुकेश को थोड़ा पीछे जाना चाहिए था, वो सोसा जाना चाहिए था, थोड़ा सा बचने के लिए गोपाल सिंह को अंदर बुलाया है क्योंकि अब इन्हें रेड लगाना है और इस रेड में देखते हैं कि क्या प्रयास वहां पर करेंगे। बट रायन, मैं तो उस मौके को ढूंढ रहा हूँ कि कब कोई एम्प्टी रेड लगाए, मुझे हमें वो मौका मिले कि हम बताएं कि अभी तक किस मैच में सबसे ज्यादा सुपर रेड्स लगी है, वो आईकेएस के एक एडिशन है या फिर एक मुकाबले में। Yeah, I mean, that's what the tempo of this game just changes all of a sudden. Just when we settle on something, it goes on so fast. A claim point. Oh, pursuit is done immediately. And look at this. We didn't even have time to talk about what happened in that previous raid because the next raid started on quickly. And it's Jasuria here who is the root cause of all problems here, Harshit. As he gets one more point. Let us shape. 2 plus 2, 4 point. Oh, 2+2 4 points। यानी कि सिर्फ वहां पर गोपाल सिंह पर किक ही नहीं लगाई है, साथ ही साथ मोनू को भी वहां पर टच कर दिया था। पूरन शेखावत जरूर नाखुश नजर आ रहे थे यहाँ पर। यहाँ देखिए कैसे 2+2, क्या मोनू भी वहां पर बाहर चले गए थे, सेल्फ आउट हो गए थे, पर यहाँ 2+2 पॉइंट है। मैं देखना चाहूंगा गोपाल सिंह की क्या पिछली रेड का रिप्ले हमें देखने को मिल सकता है, क्या गोपाल का वहां कोई टच था, क्या हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम हमें दिखा सकते हैं, क्या देवा वो स्विच कर सकते हैं कि गोपाल सिंह ने अंतिम रेड में क्या किया। पर 11 पॉइंट की लीड है जी, नहीं ये नहीं, इससे पिछली वाली रेड हम देखना चाहते हैं। यहाँ जरूर क्या शायद सेल्फ आउट हो गए, खिलाड़ी बाहर चले गए थे। इससे पिछली रेड में क्या गोपाल ने टच किया था कहीं, इससे पता लगता है कि आपके पास अगर रिव्यूज नहीं होते तो कितना जोखिम में आ जाते हैं। यहाँ रोहित यादव कुछ पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं। रायन, Yes, and while we speak about this point that's being questioned, it's 11-point difference. Palni Tuskers are slowly inching away, and I'm sure they will reduce the pace of this game. As 2 point. Periyar Panthers. This is number 11 and 8 out. तो एक और मल्टीपल पॉइंट रेड आई है और 4 सुपर रेड इस मुकाबले में लग चुकी है। 4 सुपर रेड हमें ऑलरेडी इस एडिशन में कई बार नजर आ चुके हैं रायन। तो आखिरकार हम वो आंकड़ा बताते हैं। मैच नंबर 95 पेरियार पैंथर्स बनाम चोला वीरंस का मुकाबला था, जहां पर भी 4 सुपर रेड नजर आई थी। मैच नंबर 96 तुरंत वहां पर हम्पी रोड बनाम चंबल चैलेंजर्स। इस मैच को कैसे हम भूल सकते हैं, वहां पर एक तरफ दुर्गेश कुमार थे, दूसरी तरफ गगन गौड़ा थे, उन्होंने वहां पर 4 सुपर रेड्स लगाई थी उन दोनों ने मिलके। और अगर रायन आपको जरूर एक बड़ा नाम याद होगा KMPYKS एडिशन से, आकाश शिंदे जो इंडिया कैंप का भी हिस्सा हैं और एशियन चैंपियनशिप उससे पहले थी, वहां पर भी हिस्सा थे भारतीय कैंप का। तो आकाश शिंदे उस मैच में उस टीम ने और दूल्हे चोला वीरंस ने 7 सुपर रेड लगाई थी। रायन, क्या आप बिलीव कर पा रहे हैं? सिंगल मैच சும்மா போனினா கூட உள்ள போக மாட்டான், சவுண்ட் விட்டு பின்னாடி இறங்கி காட்டினா போக மாட்டான், இல்ல அவன் அடிச்சு அடிக்கிட்டு உள்ள வந்துறான், அவன் மாட்றதுக்கு தான் வர நாமளா கொடுத்துட்டு இருக்கோம்। பரவாயில்ல, தேர் ரைடு மட்டும் ஆடுங்க, அவன் பிடிக்க ரெடியாவே இருக்கிறான், அவன்கிட்ட வைக்காத, தள்ளி வை। சரி, ஒரு தேர் ரைடு அடிச்சு போ, அவன நல்லா இஸ் வந்து கரெக்டா அடிச்சு 2-3 மட்டும் போக கூடாது। वो कैसे कम दिखा, थोड़ा हाथ नहीं खाना। ओए ओए सुन सुन, एक काम करने, इसने मुकेश ने कहते तू कम दिखा, थोड़ा सा मुझसे मारा ना, दो साथ में लेकर दोनों साथ में। Okay, download the Yuva Kabaddi series app, and Mr. Suhail Chandok's reaction there was all of our reactions when we got to know that it was
that there were seven super raids in a match. बहुत बढ़िया लेट किया रायन, आपने तारीफ करनी पड़ेगी। और सुहेल, जिसे हमने वहाँ बात भी की थी पिछले जब केएमपी वाइकेस के फाइनल में हमने उनके इस एक्सप्रेशंस की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमने उन्हें कई मूवीज में भी वहाँ पर फीचर होते हुए देखा है, तो उन्होंने कहा, सिंपली कह दिया कि ये मेरा बॉर्न टैलेंट है। Interesting. And earlier on, we did witness the timeout where the Palni Tuskers coach had told not to give multi-points because Periyar Panthers were getting multi-points in couple of forms. Either it was through those tackles or in form of raids, and the multi-points can often change the game all of a sudden without realizing. But not to forget, a man who's changed this game has definitely been Jayasurya Nagarajan. 14 raid points for him already, and he's definitely looking for more here. तो अब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट और क्लेवर खेलना पड़ेगा पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि ये तो अब तय है कि पलनी टस्कर्स, क्योंकि जयसूर्य नागराजन अपना सुपर 10 बना चुके हैं, 14 पॉइंट्स ऑलरेडी वहां पर प्राप्त कर चुके हैं, वो ज्यादा ओवर ट्राई नहीं करेंगे और 5 के हाउस में पलनी खेलना चाहेगा, जहां पर बोनस भी ऑफ होगा। रिचपाल जाट यहां पर एक लगाने का प्रयास किया है, क्या यहां पर मल्टीपल पॉइंट न देने की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से कारगर साबित हो पाएगी पलनी के लिए? पुरुषोत्तम पलनी वेल यहाँ क्या डैश कर दिया रिचपाल को, जी नहीं, एक अच्छी पैकिंग लगाने की कोशिश थी, पुरुषोत्तम ने डैश करने का प्रयास किया पर थोड़ा सा स्लाइड पॉज रिचपाल ने लिया और उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस किया। Yes, he ensured that his body was in the lobby, and the Palni Tuskers can't contest it. However, they have a do-or-die raid right now. Ram Kumar, very capable of getting multiple points in a do-or-die raid, and that is what he does. The Periyar Panthers, and this is the 5th super raid of this match, Harshit. 5 minutes remaining. You think they can challenge the 7-1? I'm not too sure, but it's very much on. ये सबसे बड़ा फॉइबल यहाँ पर कर दिखला है राम कुमार। एक और यहाँ पर डू और डाई रेड थी पेरियार पैंथर्स, तो उसको बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं थी। अनुज जैनी, रिचपाल जाट और इस साथी में एक और खिलाड़ी जरूरी है इस मुकाबले की शायद 5वीं सुपर रेड है, और इस एडिशन की हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर रेड इस मैच में हमें नजर आई है। अनडाउटेडली यहाँ पर पलनी टस्कर्स की तरफ से 4 सुपर रेड सिर्फ एक रोहित यादव ने वहां पर लगाई थी सुपर रेड, पर अब देखते हैं रोहित यादव ने सेम टर्न्स का उपयोग किया और वो सेम टर्न्स पर डिफेंडर्स कितने आइडियलिक थे, सिर्फ जयसूर्य नागराजन बाहर गए, बाकी सबने अपने हाथों को बचाया। Yes, such a nice turn there by Rohit. And in basketball, we call that the turntable. I'm sure there must be, the unique names given in every different sport. And Ram Kumar here is coming. He's coming fresh off of a super raid. And I'm sure in his mind, he has the similar intent of scoring points. That super raid took him to a super 10. So I think this is the 3rd player with the super 10 right now. Ram Kumar this time will get caught by the Periyar Panthers defense. 1 point. पिछली बार भी सोलो टैकल के लिए गए थे, इस बार भी सोलो टैकल के लिए गए, पर इस बार दोनों थाइस पर गए और हम यही आशा करते हैं रामकुमार जरूर थोड़ा सा क्या इंजर्ड वहां पर फील कर रहे हैं, कहां पर जाकर लगी थोड़ी सी, जरूर यहां गए, पूरी तरह से पटक्का था रामकुमार। हम यही आशा करते हैं और पलनी टस्कर्स के सभी फैंस भी यही आशा करेंगे रामकुमार ठीक हो, कोई भी और बड़ी इंजरी थी भी नहीं यार रायन, वहां पर सिर्फ हल्का सा शायद का थोड़ा सा स्टमक का पर अतिरिक्त दबाव गया था। बट अब देखते हैं 9 पॉइंट लीड, 3.5 मिनट से कम का समय शेष है, रोहित को कुछ फायर करना पड़ेगा यहाँ पर और वहां पर करिश्मेटिक परफॉर्मेंस दर्शाना पड़ेगा। एक पॉइंट टच करके आउट ऑफ बॉन्ड, बिना टच करे चले गए लॉबी में, रोहित यादव बाहर। Yep, the most biggest error one could do in a moment like this is what's taken place. You've given away a technical point once again to the opposition by stepping out of bounds. As we can see, Jayasurya getting treated there. Is that Jayasurya? जी हाँ, JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रामकुमार थोड़े से वहाँ इंजर्ड हुए, तो हमारा फिजियो पार्टनर वहाँ पर जरूर पहुँचे होंगे। बट अब सिर्फ एक ही जरिया है पेरियार पैंथर्स के पास कि अगर पलनी को वो ऑल आउट करें तो आने वाले 2.5 मिनट में वो मैच बदल सकते हैं, अन्यथा ये मैच अब पलनी के पक्ष में जा चुका है। 1 पॉइंट जरूर कम से कम देखना चाहेगा पेरियार पैंथर्स इस मुकाबले से, क्योंकि एक पॉइंट की अहमियत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। रायन, यहाँ पेरियार पैंथर्स ने फिर से टाइम आउट मांगा है, पूरन शेखावत क्या कहेंगे, क्योंकि रेडर्स ये जो वहाँ पर वापसी करा सकते हैं टीम की। इसने कर, अनुज करोगा तू ट्राई, तू रुक जा, डिफेंस कर, इसने गोपाल कर दे, गोपाल कर बार ट्राई, बोनस हो जाना और भी है ना सुने थोड़ा सा 2 नंबर पे खेलिए। ओके, तो ये कहना है कि पहले बोनस का भी ट्राई करो, क्योंकि 6 का हाउस है तो ये एडवांटेज है।
और 2 नंबर यानी कि कहीं ना कहीं वो कह रहे थे या तो इन या फिर 2 नंबर जो विपक्ष में है वो अच्छा कार्य। अरुल नंदा बाबू ने अच्छा कार्य किया कि बोनस का कोई मौका नहीं दिया गोपाल सिंह को। सिंगल पॉइंट ये ट्राई कर सकते थे। एलिवर्सन साहब की अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि 5 के हाउस में खिलाना चाहेंगे पलनी टस्कर्स को डिफेंस में, तो मैं कहूंगा अरुल नंदा ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है इस बार रायन। That's quite possible there because they just want to ensure that they can quickly initiate the raid and take their own sweet time because this is not a do or die raid, and Jasurya here will peacefully take his own sweet time because he has 14 points already. His team is up by 9 points and it's little over 2 minutes. Oh no, why would you do that? Why would you do that, Amit Saini? 1 point. Palni Tuskers. This is number 7 now. जय सूर्य नागराजन और राम कुमार के विरुद्ध मुझे लगा रायन आज कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स उतना अच्छा होमवर्क करके नहीं आया था क्योंकि जय सूर्य नागराजन जो है ना इतने हेवीली बिल्ट हैं। हमें एक और राजस्थान के रेडर जय भगवान की याद दिलाते हैं और जय भगवान को हम अमूमन बात करते हैं कि आप उन्हें ऐसे अकेले सोलो टैकल्स में नहीं फंसा सकते हैं, तो आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रॉपर फ्रेम में अटैक करना बेहद जरूरी है। और शायद एक ग्रीन कार्ड यहाँ पर आने वाला है। अजय मुथैया को वहाँ ग्रीन कार्ड आया है। रिचपाल जाट अब रेड लगाएंगे। अब 9 पॉइंट की लीड है और मैं तो कहूंगा कि पेरियार पैंथर्स को एटलीस्ट 1 पॉइंट इस मैच से देखना पड़ेगा। और क्या कहा एलिवर्सन साहब ने, ये हम देखते हैं। लेट द डिफेंडर्स कम टू यू, यानी कि रेडर्स को शायद वो कह रहे होंगे कि रेडर्स को आपके पास आने दीजिए, आप रेडर्स के पास मत जाइएगा, थोड़ा सा समय लगाइएगा और जब आप रेड पर जाएं तो डिफेंडर्स को अपने पास आने दीजिए। यही कहना है एलिवर्सन साहब। कुल मिलाकर उन्हें पॉइंट्स बचाने हैं अपने, जो 10 पॉइंट की लीड है, हर एक पॉइंट वहां पर मैच से प्राप्त करना चाहेंगे। रिचपाल जाट कोशिश कीजिए टच पॉइंट्स लाने की, बोनस के लिए गए थे, रिव्यू आपके पास है नहीं, तो 1 पॉइंट के लिए पेरियार पैंथर्स को लड़ना चाहिए। Yeah, they should very much. 1 point is so crucial, and you always fight till the very end in a match. As Michael Jordan stated, he never lost a game. He just ran out of time. As Stuart Singh right now will take his own sweet time as we head into the last 1 minute of this match. अंतिम मिनट यहाँ पर शेष बचा है। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया मुकाबले आज आपको देखने को मिले। इससे पहले अरावली एरोज और नीलगिरी नाइट्स का मुकाबला था, और अगर मैं बात करूं तो पेरियार पैंथर्स 17 पर था, इस हाफ में सिर्फ 12 अंक उनके लिए आए हैं। ये शायद 13वां अंक उनके लिए होगा और लगभग 18 पॉइंट पलनी टस्कर्स दूसरे हाफ में लिया है। पुरुषोत्तम पल्ली वेल अटैक करने के लिए गए वहां पर राइट फ्लैंक से, आज उनके लिए उतना अच्छा दिन नहीं गया है, बट रेडर्स ने, पलनी के रेडर्स ने पूरी तरह से मैच को बनाकर अपने प्लेट में परोस दिया है, जहां पर जीत का अब सिर्फ स्वाद चखना शेष रह गया है पलनी के लिए। Yes, it's due credit to the Palni Tuskers because they were the directors of this game predominantly. There were moments where Periyar Panthers tried to change the course of it, but it was the Palni Tuskers who managed their fate throughout this entire game. This man played a key role in it. 15 points for him out of that 39. Jasurya Nagarajan, he has been a force that everyone was reckoning to stop, and this looks like this next raid from the Periyar Panthers will be the last one of the day. इस मुकाबले की अंतिम यहाँ पर ये रेड होने वाली है, ये तय है। पलनी टस्कर्स के लिए जयसूर्य नागराजन 15, राम कुमार 10, मुकेश कन्नन 2 पॉइंट्स, डिफेंस में सिर्फ 4 पॉइंट। तो आज उसका फायदा पेरियार पैंथर्स के रेडर्स नहीं उठा पाए हैं। कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात ये भी रही है डिफेंस की कि उन्होंने मल्टीपल पॉइंट्स नहीं दिए पलनी टस्कर्स के लिए, और पेरियार पैंथर्स के लिए पहले हाफ में 5 टैकल पॉइंट थे। हमने कहा था कि मुकाबला अब सेकंड हाफ में पलनी के रेडर्स बनाम पेरियार का डिफेंस होने वाला है, और पेरियार पैंथर्स के डिफेंस ने दूसरे हाफ में सिर्फ 2 पॉइंट मोनू प्रसाद ने लिए, और शायद एक एक्स्ट्रा के सुपर टैकल के चलते 2 और पॉइंट पेरियार पैंथर्स को मिले। जय सूर्य नागराजन के विरुद्ध इतनी सारे अटेम्प्ट और मल्टीपल पॉइंट्स देने के चलते, राम कुमार को इतनी सारी सुपर हिट्स देने के चलते पलनी टस्कर्स जीता है, और पेरियार पैंथर्स शायद अपनी गलती से हारा है, ये मैं कहना चाहूंगा रायन। Yup, that's very rightly put there, and we can see this, the 8-point difference, a match that could have been so much more closer, that could have been so much more exciting, has come to an end. However, it had its points where it was exciting, a lot of super tackles coming in, a lot of interesting moments, not to forget the 5 super raids that we got to witness. It was just a lot of ups and downs, a roller coaster ride, and here we are, Harshit. देखिए आप एक बार फिर से पहले हाफ में हमें बहुत ही अच्छी सुपर एज नजर आई, दूसरे हाफ में फिर से रोहित ने थोड़े समय प्रयास किया,
डू और डाई रेट पर खेलने की कोशिश की थी, बट पलनी टस्कर्स के लिए सबसे रिकॉग्नाइजेशन वाला काम ये था कि उन्होंने मोमेंटम को स्लो डाउन नहीं होने दिया और दूसरी हाफ की स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छी की और एक बहुत अच्छी शुरुआत और एक काउंटर अटैक वाली शुरुआत रायन मैं कहता हूं कि आपके लिए आधा काम कर जाती है। तो बहुत अच्छी तरह से अटैकिंग शुरुआत थी, अग्रेसिवली और पॉजिटिव शुरुआत के साथ पलनी टस्कर्स ने इस मैच को बनाया और मुझे लगा कि यहाँ मैच पूरी तरह से पलट गया। अगर राम कुमार को शायद वो इसकी बाद वाली आएगी, यहाँ तो शायद वो सेल्फ आउट हो गए थे। यहाँ पर भी मोनू का बहुत अच्छी किक लगाई, तो सुपर टैकल का कई बार मौका था पेरियार के पास, पर वो उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाई, वो अपनी टीम में नहीं जोड़ पाई और शायद ये रेड थी, ये सुपर रेड को दी तो राम कुमार ने इस मैच को सील कर लिया पूरी तरह से अपनी टीम के लिए। रोहित यादव ने भी सेम टर्न्स का उपयोग किया, पर सिर्फ एक पॉइंट मिला रायन, तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। Indeed, you know, there were many moments like that when we thought, you know, even the Periyar Panthers, that could be the moment when they changed this game. But it did not come out through. As we take a look at the summary of this exciting match, Palni Tuskers winning by 8 points. The raid points, take a look at that. Palni Tuskers getting 8 raid points more than them. Tackle points, the Periyar Panthers had more at halftime, but they just couldn't get a lot more to, you know, even out the difference. A couple of all-outs for the Palni Tuskers, which is why they got 2 more than the Periyar Panthers. 4 extra points to the Palni Tuskers, 3 from the Periyar Panthers. So both the teams very generous here, giving points away to the opposite team. Oh, take a look at that. 4 Super 8s from the Palni Tuskers themselves. Not to forget the one very good Super 8 in the first half, which came from the Periyar Panthers side. जी हाँ, सुपर एट्स का आज बेताज बादशाह नजर आए खिलाड़ी जय सूर्य नागराजन। अगर आप इनके डायरेक्शन में बदलाव नहीं करेंगे तो ये यूं ही बहुत सारे पॉइंट लेते चले जाएंगे और आपके डिफेंस को फ्रजाइल बना देंगे। और यहाँ 17 रेड्स लगाई, 15 रेड पॉइंट्स उनके पास प्राप्त हुए, 2 सुपर रेड्स इन्होंने लगाई, 2 वहाँ पर राम कुमार ने लगाई। और जब जो अगला नाम आएगा ना, उन्होंने मुझे लगता है कि पहले हाफ के शुरुआती 7-8 मिनट में ही अपने 2 टैकल पॉइंट प्राप्त कर लिए थे। देखिए लोकेश गुजलिया 6 टैकल इनिशिएट किए, सिर्फ 2 टैकल पॉइंट प्राप्त किए, टैकल सक्सेस रेट 33 की है। ये अच्छे दृश्य नहीं है लोकेश गुजलिया के लिए और पेरियार पैंथर्स के लिए लगातार दूसरी हार आई है और इस मैच से तो उन्हें एक भी अंक नहीं मिला है। तो पेरियार पैंथर्स का थोड़ा सा गाड़ी जो है वो ट्रैक से अब उतरी है, अभी भी तीसरे पायदान पर है क्योंकि इन्होंने शुरुआती 2 में से 2 मुकाबले जीते थे। Oh yes, and take a look at the Palni Tuskers. That is called sheer dominance. Take a look at that. And we can also look at the Humpy Heroes, who will look to get their victory because they've just not been able to win any match, and it will be very important for them to start winning if they want to change their fortunes. A lot of exciting kabaddi coming your way, and Josh Jazba Junoon is what is being depicted by all these players as they climb to the top, as they are in the penultimate stage towards climbing the summit. जी हाँ, तो आज चूंकि चंबल चैलेंजर्स का वहां पर ब्रेक है, तो अगला जो मुकाबला है मैच नंबर 105 जो 8 बजे शुरू होगा आप सभी की फोन स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर। चोला वीरंस बनाम हम्पी हीरोज, एक बहुत बड़ा मैच, 6-7वें पायदान की ये लड़ाई है। हम्पी हीरोज अगर अगला मुकाबला जीतेगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए 6 पर, चोला वीरंस 7वें पर धकेल जाए, तो ये थोड़ी सी लड़ाई 6-7वें पायदान की होगी। चोला वीरंस पिछला मैच हार करा रहा है, हम्पी अभी तक इस सीजन में मुकाबला, इस एडिशन के इस चैलेंजर राउंड में मुकाबला जीता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट गेम है, इंपॉर्टेंट गेम पर आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। रायन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके साथ, बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा कमेंट्री बॉक्स में। अभी इजाजत लेते हैं हमारे सभी दर्शकों से फैन कोड पर, मिलता हूं मैं आप सभी के साथ इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।
Palni Tuskers are on the mission to conquer their opponents in the challenger round. Welcome to the post-match presentation of match number 104 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, broadcast partner FanCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Sciences, College of Physiotherapy, hospitality partner Jincha Hotel और healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. और इस स्पेशल मैच के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज ए स्पेशल गेस्ट मिस्टर संदीप यादव, ओनर ऑफ सेंटिफ्लिक्स. तहे दिल से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और आई होप कि इनकी फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आने वाली है स्पोर्ट्स मैच प्रेजेंटेशन में. बताइए इस मुकाबले की बात करते हैं जो खेला गया था पलनी टस्कर्स और पेरियार पैंथर्स के मध्य. बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो टीम्स, जहां पर पलनी टस्कर्स का रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहीं पेरियार पैंथर्स का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट कहीं ना कहीं आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट नजर आया पलनी टस्कर्स की रीडिंग डिपार्टमेंट और इस मुकाबले को सील किया विद 39-31. 8 पॉइंट से मुकाबला जीता पलनी टस्कर्स ने. सीधा चलेंगे अवार्ड की तरफ और शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के लिए आज सुपर रेट्स के बेताज बादशाह जय सूर्य नागराजन. 15 रेट पॉइंट्स और बहुत ही इफेक्टिव प्लस इफिशिएंट उनका परफॉर्मेंस देखिएगा. और अब से मैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ चलने का, तो अमूमन यही नाम आपको नजर आता है जब आप बेस्ट डिफेंडर की बात करते हैं और ये नाम और कोई नहीं पेरियार पैंथर्स के लोकेश गुसलिया हैं, जिन्होंने प्राप्त किया आज 2 टैकल पॉइंट. जरूरी के नाम के साथ साथ ये सिर्फ 2 टैकल पॉइंट नजर आते हैं, पर वो 2 टैकल पॉइंट बड़े शानदार अंदाज में आए थे. और अब ये डिफेंडर कम कप्तान चाहेगा कि अगले मुकाबले में एक बार फिर से अपनी टीम को जीत की पटरी पर लौटाया जाए. बट अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ चलने का. तो सबसे पहले पेरियार पैंथर्स ने पलनी टस्कर्स को शुरुआत में ऑल आउट किया था. उसके पश्चात पलनी टस्कर्स ने पूरी तरह से मैच में कमबैक किया. और क्यों कमबैक हुआ? क्योंकि जय सूर्य नागराजन की 4 पॉइंटर सुपर रेट, जहां पर पूरी तरह से पेरियार पैंथर्स को तोड़ दिया था और ब्रेथ टेकिंग जॉब यहां पर कर दिखलाया था जय सूर्य ने. आइए देखते हैं उनकी दमदार 4 पॉइंटर सुपर रेट. So that's all from the post-match presentation of match number 104. Thank you so much for joining us. No oil. No sweat.
सो आइए अब आप सभी को मिलते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जबरदस्त जय सूर्या नागराजन। वंडरफुल परफॉर्मेंस माय बॉय, बहुत ही अद्भुत आपने प्रदर्शन किया है और आइए इनसे हम वार्तालाप करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या प्लान्स थे आज इनकी टीम के अगेंस्ट पेरियार पैंथर्स। सो जय सूर्या नागराजन, व्हाट वाज योर प्लान? As we all know, the defense heavy side Periyar Panthers, but how you can start the things in your style in the Palani Tuskers? Periyar Tuskers is a good defense team. ஆக்சுவலி அவங்க ரொம்ப அவசரப்படுவாங்க, அது கோச் சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தார். அப்போ நாங்களும் மேட்ச்சில் நிறைய பார்த்து ரெகனைஸ் பண்ணோம். ரொம்ப அவசரப்படுறாங்க, அவங்க குத்துறது தான் அதிகமாக பண்ணுறாங்க. தை ஹோல்டு தான் அவங்களோட மெயின் ஸ்கில் எல்லா பிளேயர்ஸோடையும். அதை சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தார், அதை செக் பண்ணி விளாட்னோம், ஸ்கோர் ஆயிடுச்சு. So you have also scored 2 super raids in this match. What is your secret of getting so much of super raids as you are bulldozing the defenders very well? Which is your most powerful skill?